The technical fellow will take care. You pick up all your materials. Guys, we are meeting third time. Third time. Yes. Fourth time. Okay. That's not a fight. I just want to check. Did we finish the chapter called climate? Yes. Completed. Yes. But did we do the numericals part of it? No. हाँ. So what is happening? Wait. Listen. तो है नहीं. ये bag उठा के उधर. डब्बा पर. ये. Guys, 7:30 lectures all are acquainted now. Because one, she's doing a viper course that I have to give. Good. So good morning, this boy. Where are you from? Kaushal. Correct. And he is a local boy. What I'm going to do, because this morning 7:30 lecture, you guys are little bit, I can say daisy or not liking, because 3 days ho gaya na. Today is the 4th day. So still people are having a grudge why we are coming 7:30. Not you guys. I am coming to disturb. So initial half an hour, I won't be putting big strain on your brain. So who are in the sleeping mood? मतलब अभी तक नींद से जागा नहीं. Everyone is awake and everyone is looking bright as well. मेरे लिए भी है ना. And we will do certain numericals part, which is very important from that chapter. Next 15 minutes or 20 minutes, when we complete the numericals, as she said, we'll get into the theory. We'll do this. I've been doing with other batches also. Some batches I don't remember, they start early morning by 7. So 7 matlab some people are with their brush and toothpaste also. They don't do it. वो बोलते हैं मैंने कर लिया मतलब बदबू आ रहा जा करके है ना. तो you guys are all good. चलो numericals में you pick up your volume. There is one page number 80 I think. 80 or 81, just check. वो मुझे pages भी याद हो जाता है. हाँ, pick up same chapter climate. What's it? हाँ, page number. I'm so sorry. 85 it is. ये उसके पहले भी तो है. जहाँ से start हो रहा है वो बता मुझे. ठीक है. 84 we are starting. Everyone write it in your notebook. Today's date. Write climate. क्या ऐसा एकदम sublime mode में बैठे. Page number 85 is it? Question number 18 it is. Everyone write that. 84. Page number 84, question number 18. देखो early morning, all your bundle of energy don't spend it over your friend. Left right talk करना बंद करो. क्या रे? क्या? Now for the first time in my life, I have to miss my mother's appointment, which is all the way in Warden Road. Jaslok Hospital. वो टेंशन में गाड़ी भगा रहा था, and all of a sudden in Belapur, I think Belapur Seawoods, my chain was in a rampant mood. मुझे लगा मैं अलग और chain अलग जाएगा, the bicycle chain. तो पीछे वाले ने बोला उसमें टॉवल फंस गया. मतलब टॉवल उसमें कौन डाला? So there was a big piece of cloth. मुझे लगा गया आज. Small garage repair. Not me, the गाड़ी. But somehow फिर I pulled it. फिर मैं time पर आ गया. हाँ, I think आप लोग का hidden blessings था. नहीं था. अरे हाँ बोला ना, झूठ तो बोल सकते हैं. मैं never in my life this accident type happened. मैं बड़ा accident किया है. ये तो छोटा था. But I wanted to be on time. Late नहीं होने का, है ना? तो चलो. By your prayers, I am and my small two-wheeler is back on time. तो आज पहला आधा घंटा आप लोगों को कोई प्रेशर नहीं रहेगा. आप लोगों को गॉसिपिंग करना है या कुछ स्पाइसी न्यूज मुझे देना है या मेरे से कुछ स्पाइसी, मतलब अरे टिफिन खोलते ही स्पाइसी मम्मी ने दिया रहेगा ना, या मेरे से कुछ लेना है वो बोल सकते हैं. तो फर्स्ट हाफ एन आवर इट इज यू एंड मी, नो ज्योग्राफी कमिंग इन बिटवीन, करेक्ट. देन आप लोग बोलेगा नेक्स्ट हाफ एन आवर में बोर हो गया, पढ़ा तो पढ़ाऊं वरना नहीं. रिलैक्स, ऑल कूल. हाँ ठीक है. अगर आपको राहुल गांधी या और किसी का भी चुटकुले सुनना है वो भी रेडी. तो पहला हम लोग न्यूमेरिकल्स इसलिए करेंगे सो दैट यू गाइस कम इनटू द ग्रूव. यू अंडरस्टैंड कमिंग इनटू द ग्रूव. कभी गया ग्रूव में, म्यूजिक वाला ग्रूव में कभी गए क्या? बिलो 18 अलाउड नहीं है. तुम लोग कैसे घुसा अंदर? फिर मुझे किसी ने उधर समझाया, नहीं सर ये बिलो 18 ही अलाउड है, अबव 18 आप लोग को बाहर रुकाता है.
बोला ये कौन सा ग्रुप है, बिकॉज दैट ग्रुप यू कैन गो अलोन, यू नो दैट. तो देयर आर मेनी XYZ स्टैंडिंग आउट. अभी मैं अकेला गया अंदर, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ. तो उसको पूछूंगा तू किसके साथ है, वो बोलती है मैं अकेली है. चल तू फिर. अरे मतलब अंदर जाने के लिए एंट्री ऐसा लगता है, देन वो अपने जगह पर, मैं अपने जगह पर, समझे कि नहीं. तो ऑल आर इन द ग्रुप. विच ग्रुप? MTV. हाँ, वी आर इनटू UTV, यूनाइटेड. चलिए, I am going to explain what is the thing you have to do, because this comes every year. हाँ, if ये क्या है, हाँ जो भी है बोलो मुझे, no problem. So there are 2-3 things you have to keep in your mind. Everyone knows how to find out the range of temperature. सुना है what is range? Range का मतलब मालूम है, highest month temperature minus the lowest. Either they ask rainfall or they ask the temperature. Highest minus lowest मतलब क्या है? Range. Now अभी formula डाल दो. You put the heading formula and write. बड़ा ट्रिगो का या और कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, सिंपल फॉर्मूला. रेंज ऑफ टेम्परेचर लिखना पहले. हाँ, I seen you. I'm coming back. Range of temperature, you write highest temperature month minus the lowest. Highest month temperature minus the lowest. Everyone have understood? Now write the second formula. Annual range of temperature. Annual range of temperature. उसके पहले से तो एक वर्ड ऐड कर लो, मीन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. दिस इज हाउ दे कंफ्यूज यू. फॉर्मूला वही है बट मसाला अलग अलग लगाते हो. तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड मीन, यू गाइस हैव स्टैटिस्टिक्स विद यू ना, एनीबॉडी. हाँ, मीन का मतलब ही एवरेज है. तो व्हाट यू डू, यू ऐड, अभी ऐसा डाल देना, जैन प्लस फेब प्लस डॉट 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 अप टिल दिसंबर डिवाइड बाय, बस ये लिख देना. मीन एनुअल रेंज या मीन एनुअल रेनफॉल, कुछ भी पूछे यही करना है. And the most trickiest question our students generally copy from left and right. They will ask you to predict. ये फॉर्मूला नहीं है बट मैं उसका की बता देता हूँ. Predict the above station. अभी उन लोगों ने कुछ नहीं दिया. They have given only temperature and rainfall and they ask you to predict it. And हमारा बच्चा प्रेडिक्शन में बहुत आगे रहता है ना. प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? Any idea? They have given only the temperature and the rainfall. नाम हम कुछ नहीं दिया. तुरंत उसने recent hill station जो visit करके आया उसका नाम डाल के आ गया. What is the rationale for predicting the station's name? That branch asked me, sir, why not station? मैं बोला अच्छा ठीक है, बस स्टॉप है, लिख अभी चुपचाप. स्टेशन मतलब जो जगह का नाम, कैसे करेंगे? तो व्हाट इज द की? जनरली आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, वी हैव वेस्टर्न कोस्ट, करेक्ट, एंड वी हैव ईस्टर्न कोस्ट. अभी फर्स्ट थिंग यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू सी द टेम्परेचर. You remember there were two climate that I'll be discussing. One is maritime climate, correct, whatever is the spelling, and other is a continental climate. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा भी दिया रहता है, is it maritime or is it continental? Give reason. अभी the biggest doubt for you guys, ये दोनों होता क्या है? होता मालूम नहीं क्या होता? गौरी wants to, ये दूसरा चिपका रहा, सुना है और याद नहीं. किससे सुना है होता बोल, वो भी याद नहीं है. Any idea? Gauti wants to. What is maritime climate according to you? Very good. Generally, we call that as a coastal region. And what is continental then? एक लड़का ने लिखा था near to the continent, continental climate. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, sorry. Extreme रहेगा. Even the temperature will be extreme. And even if the temperature falls, that will also be extreme. Did I give example of Mumbai and Delhi? Mumbai experiences moderate climate, whereas Delhi experiences extreme. Winter is also extreme, summer is also extreme. तो ये भी copy करके रखो. अभी solve करते समय और practicality आएगा. हाँ, और एक question मैंने देखा yesterday was solving with other batch. The fourth type. So we have 1, 2, 3. The fourth type generally students do not get it. They'll say
what was the question? Calculate. I'm writing the question, you don't write. Calculate the rainfall. It's a very smart question they've asked. Calculate the rainfall in the monsoon season. In the monsoon season. Now, who can tell me what is this examiner is trying to confuse you? ये कुछ लोग माउथ ओपनिंग प्रोग्राम अभी स्टार्ट कर रहा है. हाँ, आधा घंटे में वो पूरा खत्म कर लो. Don't be a dinosaur or a Jurassic Park channel here. हाँ, any idea? But are you able to catch what is the question asking? What is it? But how do you know which monsoon season? There we have two monsoon season. One is southwest. एक ही है कि नहीं? Yes. पक्का. Southwest is from which month to which month? Southwest is June. ये कौन है भाई जनवरी वाला? अच्छा, many branches, my wonderful students like you guys, friends we can say, students तो बहुत छोटा हो जाता है, are doing the revision. Revision कैसा करता हूँ? Everyone come, they draw it on the board. I think 9th वाले को मैं कुछ पहला करता था, and whoever is not answering my question, they are going to repeat that same question 10 times. Shall I do it with you guys? How many have not touched the notebook till the day I have closed the notebook when we were in the branch? चलो जाने दो, वो भी नहीं चाहिए. सब लोग ने नहीं टच किया रहेगा, मुझे भी मालूम है. अच्छा, गुड बॉय. गलती से भाई साहब ने रिवाइज किया है. Now what I'm doing, what I'm trying to tell you, don't even open the notebook before you are joining my class. Maybe one day before मालूम पड़ जाता ना. Try to watch the video record. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला सर वीडियो में चैप्टर से ज्यादा आपका जोक्स याद आ जाता पूरा. And if you want, you can give the reviews also, because now I'm doing some technical work with all my students so that you are in touch with me through the medium. Anytime you can put up a question or a doubt related to my topic. मेरा ऐसा guarantee है, within 24 hours I'll revert to you. It's all there in the YouTube. हाँ, तो आपको बुक्स लेके पढ़ने का क्यों आलगेश ने बोरिंग काम दिया है, तो आप वीडियो ही देखो. कौन था उस दिन जो मेरा पहला लेक्चर में आया? गुड. I don't know this boy's name. I had told this boy's name except खारगर every branch, and they were asking कि ऐसा भी है, मतलब ऐसे ही है. वो बच्चा पहले बार मेरे क्लास में आया, but he revised the entire topic by seeing the video. Nobody has asked him. देखो, एक्साइटमेंट और एंथुसियाज्म मैंने हमेशा क्लास के बाहर देखा है. आप लोग गॉसिपिंग चालू रहता है, करो, दैट इज योर एज, बट थोड़ा बहुत क्लास के अंदर भी एक्साइटमेंट दिखा सकता है, एटलीस्ट विद मी फॉर माय स्टडीज, नॉट एनी अदर थिंग. इज इट ओके? सो हाउ मेनी विल सी द वीडियोस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स? एवरीवन. इससे क्या हो जाएगा ना, आपका रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू कैन चेक. उस दिन क्या गलती बोला, वो नया जो दोबारा, एटलीस्ट फॉर दैट यू विल सी इट. And this technical team of UT is doing a wonderful work. You can give the reviews. उसमें है ना, I don't know what you can write your, without the anonymous, you can, है ना, आज जरा गाइड कर देना तेरा दोस्त. So why I'm saying this, revision भी हो जाता है and you are getting that same topic again. So इधर आके मुंह देखता नहीं पड़ेगा क्या बोला तूने. And generally I'm once in a week, correct? So who will tell me that this? Hey Kaushal, tell me. Any idea what is this answer? Yes sir. सारा जितना भी सीजन का रेनफॉल होगा उसको प्लस. I don't understand Hindi. कोलकाता. Sir, we have to add all the rainfall का जो भी पॉइंट दिया हुआ है. Have to all this stuff. But I'm asking rainfall in the monsoon season. ऐसा कैसे एक ही साथ मानसून सीजन कैसे आएगा? महाराष्ट्र का एक साइड साउथ वेस्ट दे रहा है, दूसरा साइड में नॉर्थ ईस्ट दे रहा है, ऐसे एक साथ आएगा? कभी नहीं आएगा. कम ऑन, you are to identify, नहीं, you are to identify whether the season is getting, दोनों में से कोई एक आएगा, करेक्ट है? If it is giving southwest, आप उस डेटा में देखो, अभी आएगा उसम है, you will see the rainfall is very high in this month only. And examiner कैसे confuse करते हो? नॉर्थ ईस्ट में है, he will start with September. अभी सितंबर में है, अभी सितंबर के पहले ऐसा रहेगा 1.9 सेंटीमीटर, है ना? फिर इधर आते ही तुरंत 20 सेंटीमीटर दिखाएगा, एंड फिर अक्टूबर में रहेगा 30 सेंटीमीटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड नवंबर में रहेगा 40 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल बोल रहा हूँ.
So you are very clear cut that this season is getting which monsoon, and इसमें confused होता है लोग. From June that rise rainfall will be high, 35 centimeter, 40 centimeter, 90 centimeter, and October के पहले ही वो खत्म हो जाएगा. फिर उसके बाद directly 10 centimeter रहेगा. So what does it give an idea that that station is getting southwest. This is how you have to play a trick. समझा? So when like Kaushal was trying to answer, calculate the rainfall in the monsoon season. इसमें और एक क्वेश्चन भी आया था where other branch were confused. Same था क्वेश्चन, ये भी था, ये डाल दिया उन्होंने. बाकी सब कुछ सी. अभी monsoon season you will write southwest और पहले लिख दो. Then पूरा annual पूछा है. Annual means पूरा, बट उसको बोलो कि ये साउथ वेस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट है. और एक है अभी तक आया नहीं है बोर्ड में, शास्त्रम मेरे जैसे टैंट्रम डालेगा वो. सॉरी, व्हाट यू डू, यू ऐड ऑल डिवाइड बाय 12. चलो ये सब कॉपी कर लो फट से. दिस इज हाउ दे विल बाउंस यू एंड वंडरफुली यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स. देयर इज नो बिग रॉकेट फॉर्मूला फॉर दिस. So are we good to go with the numericals? You have a doubt. Please stand up, boy. मैं खड़ा हो जाऊं, तू बैठ जा. अरे खड़े हो जाना. No, very good question. देखो इज, अरे बैठ जा आराम से. प्रेडिक्शन में क्या होता है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज? आपका टर्न में बोलेंगे, मेरा टर्न में बोलेगा. कल है ना, मैंने नोट्स दिया है, वो रिटर्न देगा या नहीं देगा, या फाड़ के देगा या नहीं देगा, या नोटबुक क्यों घुमा देगा. देन फिर आई डोंट नो, बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर एज ट्राई टू गिव द सिग्नल्स. हाँ, मोबाइल सिग्नल्स ने दूसरा, एंड वो बोलता है ये सिग्नल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो दूसरा बोला अरे पॉजिटिव आएगा ना, किसी से बात नहीं करता, तेरे से. तुरंत वो स्टोरी लिख देगा पूरा. मालूम बड़ा काला के वो रक्षाबंधन के साथ हाथ में आया. अरे यार ये रॉन्ग सिग्नल निकला ना. अरे आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल. आप लोग और कुछ समझ रहे हैं, वो नहीं बोल रहा. ऐसे आपने बहुत वंडरफुल क्वेश्चन पूछा. प्रेडिक्शन का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है. व्हाट इज योर, वो क्या बोलते हैं, कल वही सीख रहा था मैं, वही भूल गया. इन्फ्लेशन, व्हाट डिड यू से? वो तो बहुत बड़ा होता है, हमारे पास तो इंट्यूशन नहीं है. अच्छा, लॉजिक, लॉजिक, हाउ टू अप्लाई योर लॉजिक टू गेट द करेक्ट. अभी उन लोग ने स्टेशन का नाम पूछा ना, कुछ लोग महाबलेश्वर लिख कर आया, कुछ लोग ऊटी लिख कर आया, कुछ लोग और भी कुछ लिख रहा है. मैंने बोला वैसा मत लिखो. इट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट और इट इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट में कैसा रहेगा, तो टेम्परेचर्स आर नॉट वेरी हाई. Whereas western coast you will see from month of April, May. हम लोग ये ना western coast में rainfall. एक मिनट रुक. नहीं नहीं ले, have it. अरे ले ले, अरे free of cost. अगर मैंने सिंगल यॉन किया ना, मुझे बोलना पहले, मैं जाके, है ना, you can't see me then. So when he is asking about prediction, if you are writing western coast, try to track the rainfall as well. वेस्टर्न कोस्ट में रेनफॉल कहाँ मिलता है? जून टू सितंबर. कल एक क्वेश्चन किया, वेस्ट कोस्ट था बट उसका रेनफॉल रेन शैडो रीजन था. यू नो व्हाट इज रेन शैडो? डिड वी डिस्कवर 2 हिल स्टेशन इन आवर ओन महाराष्ट्र? व्हाट वाज दैट? बट व्हाट वाज द नेम, स्टेशन नेम? वेरी गुड गर्ल. Mahabaleshwar and Vai. Mahabaleshwar gets more than 300 centimeters. Vai gets less than 60 centimeters. ये क्वेश्चन ही है आपको. Why? Are you understanding? Any other doubts? देखो, wonderful doubt. Good boy. और कुछ? चलो, let's start with the first question. हाँ. I don't know. I come to Kharghar, especially my ICSE batch. I come up with a very good mood to give them the best teaching wise. हाँ जी. कैलकुलेट ही बोला, वो लोग ने एवरेज निकालने के लिए बोला. कैलकुलेट द मीन, देन 4 महीने का लेगा, फिर 12 से डिवाइड नहीं कर सकते. यू हैव टू टेक जैन टू दिसंबर, देन ओनली एवरेज. कभी 4 महीने का एवरेज निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यू हैव टू डिवाइड बाय, एवरेज डालते ही डिवाइड बाय 12, तो पूरा ऐड करो और बोलो दिस सीजन गेट्स नॉर्थ ईस्ट. उसने एवरेज मांगा है ना, एवरेज मांगा तो मैं जून टू सितंबर तो नहीं कर सकता. देन इट इज अ रॉन्ग एवरेज. वी हैव लेफ्ट 8 मंथ्स. करेक्ट? चलो, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन.
Nobody is reading. I am reading for you. Only you have to calculate. Correct है? What is this? You guys have done changing for this only. रुको रुको इधर से तो नहीं. एक मिनट मैं बुलाता हूँ. Write down. Question number 18. Name the driest month. What you do? You check the rainfall. Who can give me any one person? Very good. You have to write the driest month is the month of March. And bracket में डाल दो 1.3 centimeters. 18 किधर है? Name the driest month is the first question of question number 18. I'm so sorry. And उसमें लिखा 1.8 centimeter. Month का नाम लिखो and bracket में लिखो 1.8 centimeters of rainfall. 1.3 भी है. I'm so sorry. March correct है. मैंने wrong बोला. Second one, अभी calculation start होगा. Calculate the annual rainfall experience. अभी एक काम करो 18 का 2 डालो. Add all Jan to December. And it is rainfall, हाँ? नहीं annually बोला है. No need. कौन बोला divide by 2? मत कर. Only annual. Add. क्या हो गया? Tension में बैठा है. All good, हाँ? Happy? इसके वजह से. Just 2 minutes. How did it went off? ओए, उसका नाम क्या है? प्रदीप, इधर आ जल्दी. Who is this कौशल ना? ये हमारा first AC बंद हो गया देख. I heard you guys have shifted to this room only for the AC ना? ये थोड़ा आ रहा है ना जरा देख जरा. हाँ. Rainfall पूछा है. Why are you going to rain temperature? Only it is rainfall. Careful हाँ. कुछ स्टूडेंट्स ने वो ब्रांच में कैसे कैलकुलेट किया 6 महीने का रेनफॉल लिया है और बाकी 6 महीने का टेम्परेचर लेके ऐड किया है. टेंशन में रिलैक्स हो जाओ. रेनफॉल में जाओ. वो निकाल के लगा वो कुछ कर रहा. मुश्किल होने वाला फिर मेरे लिए. हाँ वो हाँ. ओ माय गॉड. इधर से प्रॉब्लम इतना ही और से लो लगा देना. 24 ही है या और नीचे जाएगा? देख सर राइट. 24 से नीचे जा रहा है. देखना देख जा रहा है तो ठीक. छोड़ दे. वो भी बंद हो जाएगा. रहने. It's okay. I will be going for 4 tick marks. You understand what is 4 tick marks? 2 from this. If that answer is same, then we will say that is the answer. Understand? I'm putting that same question on the board. आराम से करो. कोई हड़ी नहीं है. It's question number 18. We are in answer number 2. Correct? Done. Tell me what is it? 129.2. आगे क्या लिखना है? पक्का? Yeah, I've got first answer is 129.2 centimeters. Let us wait for 4 ticks. 4 or 5 ticks. If more than 4 or 5 people say same, मुझे उस क्लास में 4 आंसर मिला. हाँ. Very good. I'm getting the first tick. चलो ruling party has come. Oh, one more ruling party. Any opposition party? मतलब और कुछ आंसर है क्या? और कुछ नहीं. पॉलिटिक्स नहीं सीखा. तेरा कितना है? What is the smiley? बोल. वो कर रहे तो तू क्या कर रहा है? हाँ जी. Come on, look here. Girls are doing wonderful mathematics. हाँ? कितना मिला? तेरे से ही पूछ रहा हूँ लास्ट. हाँ. ऐसा बोलना है. अच्छा, now we are opposition parties also siding with ruling. So let us put here B and G is here. है ना? और X and Y कर ले. That will be easy. Science का भी थोड़ा याद आ जाए. Last year I taught 2-3 students 10th standard ICSE physics full topic. Online था. She was not from India. Come on. Anybody? हाँ. Same है. What is this goggles man? Hello. क्या है? तुझे आया? चलो, let's have one more B coming. चलो, one more. 3:3 now. हाँ. अगर different आया तो बोलो. Then I can same. Oh, my boys are picking up. Good.
अरे क्यों ऐसे शर्मा रही है वो? चलो, so it is final. The answer for second question is 129.2 centimeters पूरा लिखो of rainfall. ये कौशल कितना मिला? How much you got? हाँ तो यही लिख ले. वो दूसरा ब्रांच में फर्स्ट बेंच में एक लड़का बैठता था, 4 जन से हो रहा. हाँ सर, सेम आंसर कुछ नहीं करता था. चलो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3. सर अभी भी कैलकुलेट ही कर रहे थे, अब आप बोल देते सही है. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. नहीं, हमारा और कोलकाता का टाइमिंग 2 घंटे का डिफरेंस है. डोंट वरी. चलो, आई एम गोइंग विद द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज एनुअल रेंज? Wait, let me pick up only one person who will give me the formula. Wait, this girl, what's your name? I forgot. Come on, Namya is going to give the formula for 18 ka third question. What is the formula for that? I don't know. Wait. Let me check the confidence. Good, sit down. It is correct. Highest month temperature minus lowest. Come on, everyone, do it. Highest month minus the lowest month temperature. Huh? Don't do the rainfall. Let's get the ticks now. Quick going. Oh, I'm so sorry. Annual range. Then go with the all. Annual range रहेगा तो भी same ही है. No problem. They are just confusing. Highest minus lowest. Correct ही है. क्योंकि पूरा महीने का हम लोग हाईएस्ट ले रहा है साल का, एंड पूरा साल का लोवेस्ट ले रहा है. एनुअल रेंज इज आल्सो करेक्ट. व्हाट इज द आंसर? 12.1 क्या है? सेंटीमीटर सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड गर्ल, शी हैज कम अप विद द फर्स्ट वन. कम ऑन. सो अगेन वी हैव जी. सेम. चलो, आई विल पुट मेनी. एवरीवन, दिस इज द फाइनल आंसर. अभी कौशल बोलना क्या कर रहा है? तो बस ये स्माइली करते रहे. आयर कमिंग दैट सर अभी भी कर रहे हैं सर. अरे इतना मैथ फास्ट मत कर, थोड़ा स्लो हो जा. ये लोग इतना जल्दी कर लेता है. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो. we are coming to your station. There is a fastest train now. What is that? Duronto. Duronto. Who has traveled by that Duronto? Acha. And how good it is? राजधानी भी है सर. राजधानी भी. Now we are want to travel by that. What is that? अभी मोदी जी ने नया लॉन्च किया है, वंदे भारत. नहीं ठीक है ना, बाजू वाले से लेके खाएंगे क्या. अच्छा. Now we are moving to question number 20. Guys and girls, please 1 minute attention. Is 18 all clear? Question number, no doubt at all. I am moving to question number 20. I am reading question number 1. Calculate the mean annual temperature. Mean मतलब add all divide by 12. चलो, अभी कौशल आंसर बोलेगा. Nobody will tell. मेरा तीसरा लेक्चर में बोलेगा तो मार्क आएगा. I will be in CBSE. Question number 20, first one. Question number 20, first question. Mean annual, Jan plus Feb plus March plus December divide by 12. Divide by 12. ये नहीं पानी नहीं लिया तूने? बिजी है भाई साहब. I had told the other branch some 2 shortcut method how to add all 12 in a very shortest possible time. अगर आप interested है तो आपको भी बताता हूँ. हाँ, but पहले कर तो लो. नॉर्मल मेथड करो ना, शॉर्ट मेथड तो कोई भी करेगा. But उधर they make a mistake. I start with December, orally calculate up till Jan within 2 minutes. तो कुछ लोग ने बोला abacus. मैंने बोला no abacus. Now we are in 10th standard. I'm waiting. Done. वो कर रहा है और तू खाली मत बैठ. Coming है. Just lazy. तू इधर आ, उसको छोड़. इससे अरे बोल, मेरे से पूछना what ले. I don't need a. हाँ. What is that out there? Fold किया. उधर मत जा चिपक. इधर आ.
सब फोल्ड किया मैंने. That I will do it. Wait. Sir, 28.625. Annual 28.625. वो मैं करवाता हूँ अलग से. अभी मत. अभी तो न्यूमेरिकली कर. बाद में मैं अलग से करवाए. लो बेस करना. Annual range या मीन पूछते डिवीजन आ जाएगा. What is Kaushal's answer? 28.625. Wonderfully correct है कि wrong है अभी चेक हो जाएगा. 625. अरे मतलब 6.2. ठीक है ठीक. 6.6. Is it rainfall? Rainfall or temperature? Sir, temperature. Okay, come on. Good boy. Kaushal has got the answer. 9.0. Division. Karo. Division. It's okay. It's okay. I can understand. I didn't get it. You have to make out. हाँ तो वही तो कर रहा है. एनुअल बोला ना. एनुअल मतलब 12 महीने में हाईएस्ट पकड़ा, 12 महीने में लोएस्ट पकड़ा, बस. एवरेज मत निकाल बस. He is getting 280. अरे 28 रहेगा. 280 कैसे रहेगा? चलो. One more boy has given me the answer close to less than 1 degree. 0.1 degree. 280 नहीं आएगा. 28.25. Oh my God. We are getting all good answers, huh? Very good. So we got a 3 tick marks to this answer. Shall we log this answer 28? रुको ये गौरी कुछ नहीं करे. गौरी ये आंसर क्या है? You divided? So 28.28. And the right answer is 28.2 point. Kolkata Babu, change kar. It's 28.25. Let us go to question number 2. I'll just borrow 1 minute. Abhi return. Hey, we are moving to question number 2. What is the total total rainfall during the monsoon? Abhi monsoon season, you look at the rainfall season and tell me. Any one person will tell. This boy, I don't remember his name. He will be telling me whether it is getting southwest. Wait. Whether it is getting northeast and what is the reason for it. Tell me. They have said what is the total rainfall during the monsoon season. Sit down. No problem. This person. What's her name? I forgot. बैठ जाइए. Manasvi going to tell me. Question number 2. पहला उसका rainfall season identify करो. Whether it is southwest or northeast. Sure. I heard it is northeast. एक मिनट रुको तो सही. हैंगर पे डालूं. Very good. Sit down. You tell me why it is southwest. भैया गेट बंद कर दो. मई जून जुलाई में साउथ वेस्ट कहां से आता है? Very good. देखो, what is the answer they are telling me? You look at the rainfall of June. How much it is, everyone? 45.3. July, August, September, even October, but October में directly 20 में आ रहा है. So we can predict that this is which season. चलो, add the rainfall from June to September. Very good. It's 180.5 centimeters. Very good boy. तो स्नैक्स मेरे तरफ से. लाया हूँ. डोंट वरी. और हम लोग जाएंगे बिकने. 6 बजे तक है ना? तो ठीक है, फिर जल्दी भाग जा. I am there up till 6:30. Hey, 180.5. I've got a wonderful answer from your name. Priyanshu. जून टू सितंबर ही ऐड करना है. आप गौरी से क्यों पूछ रहे? गौरी आपसे बहुत आगे है. कुछ कर भी रही है. Obviously. Same answer. Let us have 2 tick marks now. Where is it? Same.
आई एम लॉकिंग दिस आंसर. एवरीवन प्लीज क्रॉस चेक करो अपना आंसर. ऐसा सेम सेम बोल के सर मत दिलाओ. नो माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या बोला, ये साउथ वेस्ट मिल रहा है ना, और साउथ वेस्ट का क्या कैलेंडर है, जून टू सितंबर. जून टू सितंबर को ऐड करते बस. वेरी गुड. Hey, shall I tell one small thing about Gauri? I told her last year that I'm writing certain books, so she might be one of my main inspiration. मैं अभी start किया है, seriously, serious. ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोला. I write many English poems. अभी नहीं लिखता हूँ पहले. So might be very closely before this batch winds up, I'll tell, and I'll get some details only for studies related. और कुछ, ठीक है? तो फिर books को खरीदना मत, likes दे देना. Electronic book ही बनेगा. I'll let you know. चलो, is this answer clear to all? Anybody have any query? ओए बच्चा, पक्का revolution पहना है, कुछ ला भाई. चलो, let us go to the third question. This question I want somebody to read and give me the answer. I will give you wonderful time. एक मिनट रुको. ओए, तू get up. मराठी मानुस है हमारा. Sorry, आपका नाम भूल गया. हाँ, very good. तनवीर सिंह और रघुवीर सिंह और रणवीर. हाँ, 20 का थर्ड explained by my very good student रणवीर सिंह. Very good. What is your idea on that? Everyone cross check temperature or rainfall देखो. Is it maritime or is it continental? Continental. Very good. Very good. What is the reason? क्या temperature is low. किधर है तू? एक मिनट मोर बोला तो फिर मैरिटाइम कैसे आएगा? sit down. Anyone from good boy? I'm just confusing. Anybody who wants to go with Ranveer? Nobody. So anybody have opposite? बोलो ना. With Ranveer. So can we say what is your answer? I'm just cross checking what Ranveer has told me. 20 है ना? रुको. रेनफॉल देखते हैं, जैन में तो 0 है, फेब में भी 0 है. इट पिक्स अप ओनली इन द मंथ ऑफ जून. तो ये नॉर्मली वेस्टर्न कोस्ट का साइड पर रहेगा, ठीक है ना. लेट अस सी द टेम्परेचर. लेट अस सी द टेम्परेचर. 23, 25, 27 हाईएस्ट आके मंथ ऑफ अगस्त है, उसके बाद भी 30 और 20 में ही है, ज्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा है. तो इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट कॉन्टिनेंटल. And write the reason. पहला लिखो the station. I am giving the reason. हाँ जी. तेरी तो वो तुझे किस एंगल से तेरा भाई दिख रही है? वो एक मिनट, वो तेरा भाई दिख रही है, आई चेकअप करने बोलो उसको. Everyone please write down what is the answer, Gauri. Everyone write the above station experiences maritime climate. लिखना भाई. The above station experiences maritime climate because the annual temperature shows moderate climate. ये बैग भी उठा के रखना, बीच में सैंडविच की तरफ फंसा हुआ है दोनों. Shows what did I say? Moderate climate. At the same time, there is moderate temperature throughout the year, and along with that, rainfall experienced by southwest. तो southwest क्या करता है? टेम्परेचर को मॉडरेट कर लेता है, ठीक है. चलो, let's go. Only one question I'm going to do. You can select out of 26, 30, 28. कौन सा आपको डिफिकल्ट लगता है बोलो, एक ही करेंगे, फिर we will get into theory. नहीं और चेक करो, might be some difficult. Hey, in between this boy has asked me question number 19. ये जो question number 19 है ना, ये only theory based है, वो भी मैं solve करूंगा. 18 आज का वो मैं पूरा solve करके दूंगा, but आज इतना ही करेंगे, so that you do it at home. Next time again we'll spend early morning 10 minutes on this. 30. चलो, we are picking up question number 30. I am reading question number 1. What is the annual range of temperature? Annual range, highest minus lowest. Come on, do it. And let us bring the answer also. Kaushal, you also do it. Question number 30 we are doing. Question number 30.
I'll erase this part. पूरा यूनिट में तो बोलो 24 24 point. Very good. Come on, let's go with the next. This is the confidence I was expecting. Within no time they have given the answer. Second question is, what is the total annual? Total मतलब पूरा add ही करने का, no division. Division करेगा, the answer will go wrong. Mean में, हाँ, mean, average. This बच्चा is ready to do. Tension हो रहा है कुछ? Relax. हाँ, थोड़ा उसको support करो यार. Hey, anybody with your friends are unable to do, please hit them. Page. Oh, nice. Okay. Where is the old notebook? इधर बाहर किया. नहीं, it's okay. मैं क्यों सर्वर? But ठीक है, good. हाँ. Hey, the annual rainfall is add direct. हाँ, कुछ नहीं करना है. Then you have to divide by 12. Good. He is making a revolution with me. Good boy. Hey, there was a movie called Revolution. नहीं. वो नहीं आ रही कुछ था. How many have seen the John Wick 4 movie? अच्छा है. अभी जो recent निकला ना. मैं पिछले 3 महीने से प्लानिंग कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है वो थिएटर से जाने के बाद फिर मैं नेटफ्लिक्स में देखूंगा. Which I don't like. Today I'm planning, but it is 10:30 show. देखते हैं. John Wick 4. Somebody wants to join? See what's 112.9. 112.9. Very good. 112.9 क्या है? Units बोलो. अच्छा, centimeters of rainfall. Kaushal, just be on line with us. This is the second answer. Girls are getting same? 112.9. Wonderful. Let us go with the third question. Why would it be correct to presume that the station lies in the interior, listen, and not on the coast? अभी answer उन लोग ने खुद दिया है. The answer is they are saying it is interior and not on the coast. अभी just everyone drop your pens and listen to me for 2 minutes. If the बुढ़ा के फेंको बाहर. If the station is not in the coast, it will have moderate. If it is in the interior, there will be extreme heat. अगर उन लोग ने heat नहीं दिखाया, temperature drop दिखाएगा. So let us analyze the heat only, temperature. It is 12, 25, 26, 27, 30, 36, 36, 35, 30, 28, 21, 60. Let us see the rainfall. 1.5, 0.1. जून में जाके increase हो रहा है. 21, 25, 27, 24. फिर ड्रॉप हो रहा है 9.4, 1.5, 0.4. तो ये स्टेशन को साउथ वेस्ट मिल रहा है, वो तो गारंटी है. इफ यू सी द टेम्परेचर राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब, इट इज ऑन द राइज. जबकि अपना फेब में सब क्या रहता है? विंटर रहता है. इज द विंटर शोइंग 25? सो इट इज इंटीरियर और इज इट ऑन द कोस्ट? तो पहला आंसर लिख दो, द अबव स्टेशन लाइज इन द इंटीरियर. फिर रीजन मैं देता हूं. कौशल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, थैंक यू. कभी पिला थम्स अप? The above station lies in the interior parts of India. Since ये जिसका भी नोटबुक कंप्लीट नहीं, कंप्लीट करो. नेक्स्ट वीक मॉर्निंग नोटबुक चेकिंग, इफ नॉट आउटसाइड चेकिंग. हाँ, कितने नहीं, जो पहला आज तक जो हुआ है वो पहला कंप्लीट कर ले. मैं बताऊंगा ना, सेकंड लेक्चर भी मैं आ रहा हूँ. हाँ, since there is a steady increase of temperature, there is steady increase in temperature from the month of February. अगर आपको February में मिस्टेक होने का चांस है, फेबी लिखो, चलेगा. How do you spell the word February? हाँ, I think Indians are good with the pronunciation. How do you pronounce? Pakka. Good. You're all Americans, huh? हाँ, फरवरी. अच्छा, अगर फरवरी लिखता है, look at the spelling of the person. ये भी मैंने क्लास नोटबुक में देखा है. फरवरी.
Word Hindi का है, but spelling English का है. As if I am sending a text message to a so-called person who reads English but doesn't know what is English. So alphabet पूरा English का है, but words पूरा हिंदी का है. तुरंत हमारा रघुवीर रणवीर, अरे मुझे लग रहा है आंसर आ गया. तो बोलने तो दे पूरा. Don't be sorry यार, मेरे साथ तो नहीं, बिंदास. Did you get it? There is steady increase in the temperature from the month of February till September. And bracket में दोनों month का temperature लिखो. Feb का लिखना 25.5 degree centigrade and September का लिखना 30. Is this part clear? So now this chapter whole and soul we have done. Shall we go to a new chapter? Yes. Somebody told me, I forgot. What is the? वो नहीं दिया मैं. Second lecture में दूं. अभी fresh एक नया chapter start करेंगे. With your permission. चलिए. Thanks for giving me the permission. Everyone, you want me to start this chapter very short and sweet? Wait. हाँ, मैं आ रहा हूँ. फिर एक टोपो करके एक सरदर्द है जो मैडम अभी मुंह खोल रही है, पानी पी लेना. हाँ, सरदर्द कुछ नहीं है. Wait. But wait. Is it any nearby exam? Yes, sir. What time it is? सर कल ही एग्जाम है. किसका? टोपो का? तू कर क्या रहा है फिर इधर आज? Wait. I'll cross check because हाँ बोल. I'm listening. आप जो पढ़ा रहे हो वही कर रहे हैं. मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो क्यों कर रहा है? Good boy. You are a Bihari in Kolkata. Just give me 2 minutes. And there are certain topics taken by our Anubhav sir. Okay, इसने text भेजा वो होंगे. अच्छा समीर. I'm just गर्मी हो रहा है. I know. Listen. 10th ICSE Khargar ना. Which part is with me? Which part is not with me? तो एक काम करते हैं. Now I will start with soil because मेरा वो theory भी बाकी है. Next lecture morning we'll start with topo. Will do? So that you are also prepared with your doubt. I also start fresh in the morning topo. चलो अभी soil resources डाल दो. It is with me. Next lecture onwards I will start with topo. हाँ तो ये मेरा वॉल्यूम है ना तेरे पास, बाद में दे दे. अच्छा अभी दे दे, मैं भूल जाऊंगा. Everyone write soil resources in your notebook. Write the introduction part which I am giving. Soil resources. Chapter here. New chapter, put today's date 4th May, is it? And this is very simple and easy. I think most probably we can finish it. Soil resources. Write the introduction part. Shall I? अच्छा पूरा लिख दे. चलो write down introduction and make a small margin. वो भी करेंगे. पहले introduction लिख देना. Soil refers to topmost. Aram sir, I'll be going slow. Soil refers to topmost, fertile thinner layer or thinnermost fertile layer, whatever you do. Thinnermost fertile layer, topmost, thinnermost fertile layer, supporting vegetation and forest types, supporting vegetation and different forest types. Supporting vegetations and forest types, different forest types. One more sentence for the intro. Types. India being an agricultural country, with more than 50% of the population,
with more than 50% of the population. I'm going slow so that you guys are tired of doing the numericals, na? Engaged in agriculture. More than 50% of the population are engaged in agriculture. Percent of the population are engaged in agriculture. Then the last line, then we will start explaining soil fertility. Iska meaning, soil fertility refers to its production capacity. Its production capacity refers to its production capacity or nutrients present in the soil. Nutrients present in the soil supporting सर सॉइल क्या बोले सॉइल फर्टिलाइजेशन ज्योग्राफी और बायोलॉजी को एक साथ किसने मिक्स करने बोला? फर्टिलाइजेशन ऑफ सॉइल. अरे सर आप बोले क्या थे याद नहीं सॉइल फर्टिलिटी बोला है, तो वहां बैठे बैठे ज्योग्राफी साइंटिस्ट मत बन जाए. हाँ, nutrients present in the soil, nutrients present in the soil supporting, nutrients present in the soil supporting different crops. Change the para. Different crops. Change the para. And this also in board exam they've asked. Hey, just don't laugh on my सर pronunciation. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द Soil supporting different crops. Hey, people call this as humus, allowed, but now I think Oxford people say hummus. हाँ, hummus भी बोल सकता है. Not Hummer, that's a car. Hummus. Write down. It is hummus I'm giving. Find vegetal and animal. The word is right here. It's from the volume. Vegetal and animal. It is. Here is starting or ending. It's okay. या हमारा मानुस वही सोचा कैसे भाई साहब चुप बैठ गया. It is vegetal. अच्छा sorry. अच्छा ठीक है. Vegetal and animal remains enriching the topmost soil layer of the soil. Sorry. That's it. Now you can drop your pen, pick up your pencil. Writing come, learning ज़्यादा. Good half an hour है. Mostly ये chapter यही class में खत्म करता हूँ. Next class में. While looking at the introduction, अच्छा पहले have some water. I could also. किसका है mobile? There is one small practice. I'll do it with the next lecture. Respective benches will collect all the 3, 4, how many students? It should be on the left and right hand corner by turning it on silent. मैं भी अपना मोबाइल उठा के विंडो के साइड में रख दे. ठीक है? अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर से. So that क्या हो जाएगा, मेरा पूरा कंसंट्रेशन उधर रहेगा. कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बुक्स में रहेगा. This Nerul branch every lecture they do it. मैं आते ही साइलेंट पर डालेंगे, राइट साइड में रख देंगे. कूल. और शैल वी गो टू द ऑफिस एंड कीप, फिर लाएगा फिर लेके जाएगा, वो टेंशन नहीं चाहिए. गुड रिलैक्स यार. मेरे लेक्चर में स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं होना. दिस मोड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इज ओके. स्लोली मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्पीड इंक्रीज करेगा. करेक्ट. अभी भी मैं नॉर्मल स्पीड पे ही हूँ. स्पीड मतलब कोई ऐसा, वी आर नॉट गोइंग फॉर F1 रेस हियर, बट वंस यू आर हैबिचुएटेड विद माय मेथड ऑफ टीचिंग, आई कैन पुल द पोर्शन अहेड. अभी इस साल मैं लास्ट ईयर से बहुत सारा चेंजेस लाया हूँ, मेरा मेकअप में नहीं.
method of teaching में, so that I want to spend more time with you guys in making you to learn the question answers. है ना, कुछ लोग मेरे से बोला सर रट्टा मारता है, कुछ लोग बोलते हैं दूसरे से कॉपी मारता है, कुछ लोग बोलते हैं ये दोनों नहीं करता, छोड़ के आता है. I want make every chapter में you guys will select 5 difficult answer which you feel difficult to learn. तो उस चैप्टर होने के बाद एक दिन में ओनली लर्निंग स्पेंड करेगा और उस आंसर को मैं शॉर्ट भी करेगा और स्वीट भी कर देगा. करेक्ट? ये सब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो करूंगा. पहला 2 लेक्चर में किया, उसके बाद नहीं चाहिए. मोर यू आर एक्साइटेड टू ज्वाइन विथ मी फॉर न्यू एंड न्यू थिंग्स. टोपो शीट के लिए तो मैं अलग ही करूंगा विद वीडियोस एंड अदर थिंग. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, all the school teachers might have made a topo sheet as the Pandavgada hill, which is not so. Mount Everest, which is very easy. You can ask all your friends who have done through UT and I have taught them. Topo sheet, I make it so simple. You can do it at any point of time. Happy? Chalo. Introduction base में कौन सा definition you want me to explain? You want me to explain humus? You want me to explain soil? Or you want me to explain soil fertility? पक्का सर हमस. अच्छा हमस चाहिए. देखो नॉर्मली सॉइल बोलते ही आई रिमेम्बर ऑल आवर लाइफ इफ एट ऑल यू हैव स्पेंट सम टाइम इन योर विलेज. एंड नॉर्मली मराठी मानुस, मैं खुद भी महाराष्ट्र में डीप गांव में रह चुका है, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहा है. बिकॉज नाइदर दे अंडरस्टैंड माई मराठी, आई विल नेवर अंडरस्टैंड देयर मराठी. इट्स प्योर मराठी. ओके. व्हेनेवर द स्मॉल बच्चा गेट्स हर्ट, दे ट्राई टू रब इट विद द सॉइल एंड बोलते ये ऑइंटमेंट है. यही हमारा सिटी वाला मम्मी पहला डेटॉल, सैवलॉन, है ना, फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन, फिर बड़ा बैंडेज बांध दी. तो मेनी पीपल आस्क मी सर ये सॉइल में ऐसा क्या है? somebody told that nutrients, fertility, उसमें hidden minerals है. and sorry to say, one of my friend, long time friend only, my college fellow, in I think that Roadpali area, we have a big police academy where he practices. He's a coach, not he practices, a full-time wrestler. And maybe 2-3 बार गया, wrestling करने नहीं गया, to add on to his program. Next few months I'll be teaching some people who are going for this NDA. तो उसका भी lecture मैं ready कर रहा हूँ. I'm very happy that NDA students को मैं पढ़ाएगा. Those who are going for police constable, going for army entrance exam, navy entrance. तो मेरे लिए भी challenging है, but उनको मैं नहीं बताएगा. I'm teaching. I've already started practicing how to give lectures to them. If you go there, I had seen that Akada, that academy, the soil that they use, they prepare it with special nutrients. He told me some oil, special oil add करता है, some other things they added. And जो भी wrestler को मैंने देखा है ना, छोटे-छोटे बच्चे हैं, लड़के भी है, लड़कियां भी है. They come, they first smear their body with that soil only. हमको लगता है ये क्या कर रहा है, अपने मुंह में मिट्टी लगा रहा है. हाँ, to be very frank, he says once you apply that mitti and continuously practice, no skin related problem comes. अभी ये अमेरिकन लोग को मालूम पड़ गया. अभी वो लोग वो कौन सा बात लगाता है, कुछ तो मिट्टी लेके पूरा मुंह पे पेस्ट करता है वो लोग. हाँ, नहीं, not मुल्तानी, some other. They say it is a soil bath or something. Apply, for which I heard they take it $15 to $20. मतलब वो कुछ मिट्टी रहता है, they apply it in a very ग्लव्स वगैरह पहन के, मास्क वगैरह, मुल्तानी मिट्टी, हाँ जो भी है. और बड़ा सा एक एरोमा रूम रहेगा. एंड मैडम इज वेरी हैप्पी टू सी द रूम. अभी $20 निकलेगा, है ना. इन सर्टेन अदर कंट्रीज आई हैव सीन इवन फुट मसाज इज कॉस्टिंग यू $25, जबकि $20 में हमारा सुबह से लेके शाम तक खाना हो जाता है. बट दे विल गो एंड पुट द फीट इन फ्रंट ऑफ द 2 लेडीज हु विल बी सिटिंग, एंड वो मैडम ब्रश लेके साफ करेगी, फिर वो टॉवल से, ऐसा टॉवल मैंने अपने मुंह पे भी नहीं यूज किया रहेगा, क्योंकि $20 लेना है उससे. नेक्स्ट 1 hour दैट लेडी स्पेशलिस्ट, ये सब है फॉरेन में, आपको क्या लगता है. एंड फिर मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड्स थे, तो मैं बेचारे क्या मिलता है इसमें, और ये मुझे लगता है मैं हवे में उड़ रहा हूँ. मतलब जरा उड़ के दिखा, मतलब अरे तू ही तो बोला हवे में उड़ रहा है. मतलब 1 hour that lady is working on. What does it mean? Now the same soil which you and me are using for agriculture has entered our cosmetics also. So what is the soil important for you and me? It's mainly for agriculture. देखो, India today is an agricultural country. Do you think after 40 years it will become a mechanized country? It will be agriculture. However, you and me are highly mechanized or highly instrumental type. But can we forget our agriculture? Why not?
We can't have a capsule or a tablet for breakfast and a lunch. आपने पूछा मम्मी क्या बना है, टेबल में है ना, क्या है, अरे 2 कैप्सूल रखे खा, है ये कौन सा लंच हुआ, अरे उससे भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, पापा देखते हैं इतना बड़ा न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज वी इंडियंस आर गुड इन, कल खुद भी मैं कोपरकेना ब्रांच में एक होटल में जाके लंच किया एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ राजस्थानी टाइप, मैं कुछ 15 दिन उधर गया था ना, एंड आई कांट फॉरगेट द दाल बाटी व्हिच दे गिव मी। मैं पहला रेस्टोरेंट में उधर गया, दाल बाटी पूछा, मुझे लगा दाल और बाटी मतलब कुछ राइस वगैरह रहेगा, he gave me 3 like this। सर दाल बाटी नहीं, दाल बाटी। अच्छा ठीक है ना, तू कोलकाता में ये कोलकाता राजस्थानी है। Then that fellow told me, sir आपको दाल बाटी भी इधर मिलेगा, मतलब कब मिलेगा, संडे टू संडे, मतलब वेरी गुड। So I took some chapatis and puris, but the whole evening I was remembering him because the oil that he might have used was very good. तो रात में भी घर पे आके मैं खाना नहीं जा रहा था, मतलब वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। What does it mean? Whenever you and me thrive on certain food, we remember our agriculture. How many of you know that yesterday there was an attack on Kremlin Palace? अभी बोलेगा Kremlin agriculture में कहाँ से है? Kremlin is that main citadel. You understand in English citadel? Shakespeare पढ़ता है ना? Citadel of Russian government. And हमारा Mr. Putin is inside that citadel only. Seriously. And तुरंत कल पुतिन ने चार्जेस लगा दिया, क्या लगाया, यूक्रेन इज ट्राइंग टू किल मिस्टर पुतिन। एंड फिर नीचे न्यूज आ रहा है, ही वाज नॉट देयर, वो किधर ही तो पब में बैठा था। बट व्हाट इज द courage of this Ukraine, and Kremlin Palace is considered to be the biggest stronghold. Even ये जो व्हाइट हाउस है ना, उससे भी स्ट्रांग है। पेंटागन सुना है अमेरिका का, उससे भी फुल्ली सेफगार्डेड है। 2 ड्रोन अंदर गया, बट दे हैव शॉट डाउन द ड्रोन। तो बेचारा उधर से रोते रहते ज़ेलेंस्की बोल रहा है, हमारे पास तो कल सुबह का नाश्ता नहीं है, मैं क्यों ड्रोन भेजेगा उधर। आई एम जस्ट सेइंग इट जोकिंगली, बट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। So why did I mention this incident? Ukraine is considered to be the bread basket of Europe. किसी को मालूम था? अभी ना ही ब्रेड है ना ही बास्केट है, ओनली बुलेट और शेल्स पड़ा है उधर, क्योंकि रशिया इतना सप्लाई करता है, ये ले ये ले ये ले। So Ukraine has stopped producing wheat for last 2 years, and India is taking the advantage of it. क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बिग बिजनेसमैन है, and correct. He is selling Ukraine, not only Ukraine, all the European countries wheat, and for the first time हमारा wheat farmers are double happy. शायद पंजाबी बोलता रहेगा, हमारा wheat जाता है यूक्रेन। So look at our agriculture reaching to that corner. Abhi many people from Ukraine and that adjoining states, now they eat the roti or whatever bread made out of Punjab and Haryana wheat. Are we not proud for that? तुरंत बोलेगा अकाउंट में कितना पैसा है, पहले वो देख। So that is what I am saying, agriculture and soil is so important. तो नेक्स्ट टाइम आप भी अगर अपना विलेज में जाएगा, अगर सॉइल अच्छा क्वालिटी का है तो थोड़ा सा बॉडी में लगा के देखो, they say it is very good, because that is what many Maharashtrians have heard. They respect it. You are not allowed to wear the shoes or chappals when you are getting into the farm. That is the respect that they give it to the farm, and we also give it. Correct? ऐसा नहीं कि हम लोग born and brought up city है तो we don't respect agriculture or farmers. So now I take you agriculture. There are good number of soil that you have to study, but soil chapter is very easy. 2 soil they will ask you in detail. One is alluvial and other is black soil. अभी थोड़ा जनरल बताता हूँ, फिर आपको टेक्निकल में लेके जाता हूँ, है टाइम है? हाँ जी। रेड सॉइल भी है। When I say alluvial soil, how many of you tell that it is a transported soil or a residual soil? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वंडरफुल। क्या मतलब है उसका पहला? सर वो हिमालय से जो भी न्यूट्रिएंट्स आता है उसको वो लेते हुए आता है। हिमालय से? ये कहाँ से? हिमालय और जहां से भी आता है, अरे वहां वो का जो रॉक्स रहते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको लेके आता है। नहीं, सॉरी। Wait, I'll explain. Good boy. तेरा explanation थोड़ा wrong है, but मैं बता देता हूँ क्या wrong है. So transported, in exam they will ask you this question pertinently to confuse you. Is alluvial soil a transported soil? You write yes, they'll ask you why. Every soil, it is categorized into 2 types. One is transported and residual.
I will transport it. I will write like this: formation in a different place. Correct? I'll write formation. The deposition is a different place. I draw you this river which is flowing and joining the sea. So this middle course, correct? And the lower course. Now before the river joins the lower course, it tries to deposit the sediments. And there will be in a course, a delta will be formed, which is a triangular piece of fertile land, and normally ये alluvial soil ही रहता है. तो ये transported है. Do you accept? Yes. What is residual? Then I'll have to tell black soil is a generally good example of a residual soil. And black soil is formed out of the volcanic rock, which we call as an igneous rock. Igneous rock. And Maharashtra is the best propounder of black soil. Normally, if the volcanic eruption might have happened few million years ago, these rocks are very solid. The weathering takes place. Correct? Then the smaller rock. Again weathering takes place. I'll say again smaller rock. Again weathering takes place. Finally, with the course of years, a soil is formed. I mean, what I will write that residual formation bhi wahi jagah and weathering bhi wahi jagah. It is not transported by wind, water or any other agents. So you have to categorize the soil as which soil? Transported soil or is it clear? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे और एक कुछ वर्ड्स दिखा. They have written in situ. ये नेरुल में एक लड़का का एग्जाम था, वो बोला ट्रांस सिचू. बोले ये क्या होता है? हाँ ऐसा कुछ. हाँ एक्स सिचू. कौन से स्कूल में बोला? अच्छा अच्छा जो होता है. In situ मतलब wherever it is formed, there only it is found. ये geographical word है, very few people. Soil formation in situ. उधर ही मिलेगा. Ex situ, not in that original place, in a different place. Is it okay? अभी ये समझ में आया. So put the heading, everyone notebook, soil ऐसा लिखना है, transported and residual. Don't write the meaning, बस meaning याद रखना. इसका example लिखो alluvial soil, इसका example लिखो black soil. Write down. Oh, good. And sorry, I had seen my Kharghar branch batch of ICSE very excited when I was first lecture. Second lecture, very much excited. है ना? अभी भी है. So maintain that excitement and enthusiasm throughout the year. तो मेरे लिए भी थोड़ा है ना? ऐसा नहीं कि 2 महीने के बाद क्यों आया अभी लेक्चर के लिए, ऐसा मत पूछना. Shall we? Now pick up to volume page number 87. Please write alluvial soil as number 1 or A. Formation in a different place, found in a different place. You want the meaning? Now keep putting, if you have capital A लिखा ना, alluvial soil को capital A लिखा, write 1, 2, 3 sub points. Exam में ऐसे ही लिखो. They will not ask you detailed questions. Come on. First, formation, open bracket, silt deposition, close bracket, by rivers. Keep a pencil. ऐसे ही learn होगा पूरा. क्या हो गया? No need, volume ले ले. मैंने क्या बोला, पूरा चैप्टर वॉल्यूम से ही जाए. सेकंड, एरियाज कवर्ड लिखना, डोंट ऑक्यूपाइड. स्टार्ट विद पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल मार्कर. हाँ जरा मैडम बैनर्जी से मीटिंग तो लगा मेरा. She will munch me into half. Then composition, उसमें एक छोटा ट्रिक है. Wait, I'll write it on the board. Hope my students understand. In exam they'll bounce you. ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. They will ask you alluvial soil, what it is rich in and what it is poor in. समझा what the meaning? What is the meaning? क्या है? मतलब rich मतलब उसमें कौन सा nutrients ज्यादा है and कौन सा nutrients नहीं है. अभी एक छोटा क्वेश्चन आया था where students are bounced. They asked you black soil, it is normally deficient of humus. Humus समझा? Dead animal and plant. And students, यार तेरा backbone दिखाने की तरह yawn क्यों कर?
तू ये आजा, गेट अप जा, स्प्लैश सम वाटर एंड कम, थैंक्स बोल मेरे लिए, जल्दी जा एंड कीप दिस बैग्स हाँ लिटिल बिट, हाँ डोंट फॉल, हाँ जल्दी जल्दी, कॉफी टी, अरे पिएगा क्या? When they हाँ पूछ ले, कोका कोला भी है. When they ask that why this black soil is poor in humus, the answer you have to write the parent rock. Parent rock कौन सा rock है? Igneous rock है. So it was formed by volcano. अभी volcano में कुछ plant और animal जिंदा रहेगा, correct है? So that is why it is lacking humus. Then they ask, alluvial soil is rich of potash and lime. तो अभी आएगा. What is the answer? तुरंत नीचे लिखा. I'll get you to explain. It brings lot of calcareous rocks, erosion, and deposits in the delta. And there are two types of alluvial soil. हाँ जी बोलो. ब्लैक सॉइल का और एक बार बता देंगे? हाँ बिल्कुल, मैं आंसर देता हूँ उसका, don't worry. There are two soils you will be studying. One is khadar, ये सुना है, and other is bangar. And every year my wonderful students, bangar. हाँ good boy. एक बाल will बने क्या? So if you say khadar, you remember it is new alluvium, and इसका name match भी होता है, old alluvium. है ना भांगर, इसका मैं distinguish दूंगा. But all this bangar soil, मतलब कोई बंगार नहीं है. चलिए, let's proceed with alluvial. Composition, underline that, rich in potash and lime. अभी समझ रहा मैं, ये मैंने क्यों लिखा? Deficient in nitrogen, phosphoric acid and humus. इधर भी नहीं है. हाँ, lower layers में मिलता है humus, but इधर नहीं है. Characteristics, अभी points लिखना 1 2 3. Formed by deposition of river. वो lads लिखा है, वो पता नहीं, वो cancel ही करो. What is that? Second point, light and porous. Third point, fertile soil, rich in minerals. ये fourth point है. Next point, deficient in nitrogen and humus. ये देखो, ये मिलेगा. ये fifth point कर लो. Found, अच्छा, then fifth point, except लिखा ना, उसके आगे fifth डाल दो. Found in alluvium Ganga deltaic region. What is found? Humus. चलो, put the heading in your notebook. Alluvial soil. ये short word लिखो. एक sentence, एक point में 2 word या 3 word ही है. Correct? Short लिखो and you will understand. I'm feeling tired. You're yawning so bad. Yesterday, late night study. And then what? Time pass के लिए yawn करती है. तो भी इतना बड़ा आवाज कर रहा है. मैं उससे बात कर रहा हूँ. What are you listening? All good boys, huh? वो ऐड आता ना, boys will be boys. What is that? Sigrams. Men will be men. अभी इधर किधर है men except me. So boys will be boys. Sigrams junior. क्या है रे Sigrams? अरे क्या है, मुझे मालूम नहीं, बताओ तो सही. सर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक बार बता दीजिए ना. अरे रुकना है, इधर Sigrams का. Here we are talking about Sigrams. तू characteristics क्यों कर रहा है? Characteristics और एक बार बताऊं. सिग्मा होता है. सिग्मा नहीं है वो, उधर ही बंगाली में रहे. Point number 1 I am repeating, formed by deposition of river beds रहेगा. Second, light and porous. Third, fertile soil rich in minerals. Fourth या fifth जो भी है, deficient in nitrogen, humus. Last point रहेगा, humus is found in alluvium Ganga deltaic region. ऐसा लिख दो. Easy? And exam में भी इतना ही लिखना based on the marks. Next page. Shall we? पहले लिखो. Hurry, no hurry. सर आप उसका आंसर नहीं बताया. Why black soil is not rich in humus? अरे रुकना, अभी ब्लैक सॉइल में आया किधर है? नहीं, वो उसको थोड़ा लेट सुनता है. अभी when I come back to a black soil, that time you ask me. ओए बंडू, हाँ, thank you.
ये कभी पिक्चर्स वगैरह भेज कोलकाता का ओए। हाँ मैडम बैनर्जी दिखना चाहिए वरना मुझे एक भी पिक्चर नहीं चाहिए। मैम उनको नहीं देखना ज्यादा अच्छा है। अरे मैं हर रोज देखता हूँ सपने में आती है पता नहीं क्यों। ओके ओके देख दीजिए सपने से। शी इज एल्डर टू मी, ग्रानी हो सकती है, नानी हो सकती है या तुम्हारी दादी माँ भी हो सकती है। हाँ how many of you know that her name is not Mamta, her name is Mumtaz Begum। हाँ उसका ओरिजिनल नेम है वो। हाँ नहीं उसका तो 2-3 अकाउंट खुला है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी सिख अकाउंट खुला है और कुछ नहीं। He didn't catch it what is account खुला है। How many of you know that Mrs. Indira Gandhi was the most powerful iron lady of India? If you go to Andaman, उधर मैडम ने एक बड़ा स्मारक रखा है। She had a good connection with Bangladesh also. So if I want to tell you certain secrets, there is one not a prime minister, chief minister रह चुका है Mr. Omar Abdullah. He was the youngest chief minister. उसका शक्ल और अपना राहुल का almost 90% मैच होगा। हाँ तो Mrs. Indira Gandhi was a very universal kind of a lady. कभी बांग्लादेश कभी फिर भूटान। हाँ इट्स ट्रूथ। तो अभी भी आप अंडमान जाएगा ना मैडम का सिग्नेचर है ऑल बांग्लादेशी मस्ट कम टू अंडमान एंड निकोबार। तो अभी अंडमान निकोबार एक टाइम पे इंडियन से भरा था, अभी पूरा बांग्लादेशी भरा है उधर। तो लोग इंदिरा गांधी को माता मानता है क्योंकि उसने उधर किसी से मतलब माता बनने का कोशिश किया। मम्मी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाई गौरी इज लुकिंग विद अ डाउटफुल लुक। क्रॉप्स एसोसिएटेड पॉइंट नंबर 6। अभी इधर अंडरलाइन कर लो, अभी लिखना कुछ नहीं है। व्हेन यू गो होम यू राइट करेक्ट। चलो मेनली पुट इनटू ब्रैकेट व्हीट राइस शुगरकेन कॉटन जूट एंड ऑयल सीड। एनी फोर अच्छा ठीक है एनी टू। लेट अस गो इनटू टाइप्स। अभी याद है मैंने बोला खादर एंड बांगर। उधर कर लो खादर एंड बांगर। खादर के ब्रैकेट में लिखो न्यूअर एलुवियम। न्यूअर लिखना। स्पेलिंग ऑफ न्यूअर इज दिस। एक पेपर में मैंने ऐसा देखा है न्यूअर एलुवियम। मैंने बोला इट इज न्यूअर। हाँ सर सेम स्पेलिंग है। मैंने उस लड़के को ऐसा समझाया। तो क्या बोलता है सर ये आपका टाइम का न्यूअर है या हमारा टाइम का न्यूअर है। दिस इज नेवर। न्यूअर एलुवियम। फिर बांगर में लिख लेना ओल्डर एलुवियम। एंड देन ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपाइड इनलैंड डेल्टाइक एंड कोस्टल। ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा इन द सेकेंड लेक्चर। लेट अस गो टू ब्लैक सॉइल। आया रे तेरा ब्लैक सॉइल। नो नीड नो राइट वो मैं बताऊंगा इन द एंड ऑफ द क्लास आई विल टेल यू। प्लीज पुट पॉइंट नंबर 1 फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ। ऊपर लिखो वॉल्केनिक रॉक्स। लावा रॉक्स को हटाओ। इट्स ओके क्या हो गया रॉक्स एंड ब्रैकेट में डाल दो इग्नियस। भाई जी आपको लिखना है igneous. Want the spelling of igneous? Everybody knows? Good. Oh, thank you. Second point, areas covered लिखना, occupied भी नहीं चाहिए. Open bracket from Maharashtra. सर एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए ना प्लीज। हाँ फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग लावा के जगह पर वेदरिंग वॉल्केनिक लिखना। Areas covered, open bracket from Maharashtra, Gujarat, AP, MP, Chhattisgarh and Tamil Nadu. You remember up till MP, Chhattisgarh nahi chahiye. Color black, very important. Composition, this question will come, open bracket. Rich in iron, lime, aluminium, potash, magnesium, calcium, close bracket. देखो, black soil is more fertile than alluvial. But why people demand alluvial more? Because black soil only Deccan Plateau में मिलता है. Alluvial soil पूरा North Indian plain. ये भाई साहब ने हिमालय बोला ना, हिमालय कुछ नहीं है, पंजाब से लेके हरियाणा से लेके यूपी से लेके मध्य प्रदेश में भी मिलता है। एंड ऑल द एग्रीकल्चरली एडवांस स्टेट दे हैव विच सॉइल alluvial soil. I remember whenever I go out of Maharashtra either by road or by train, when the black soil region starts you can identify कि we are into Maharashtra. मतलब उत्तराखंड में है बट इतना नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। हाँ आई एम टॉकिंग ब्लैक। चलो लेट अस कम टू ब्लैक नाउ। कॉम्पोजिशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स अब इधर पॉइंट्स डाल दो, स्मॉल 1 2 3। फाइन टेक्सचर एंड क्लेई। क्लेई के ऊपर 2 क्वेश्चन मार्क डालो।
Remind me when I'm joining the next class. I'll explain. There is one question there. Underline black in color, weathered lava. बस उतना ही लिखो. Fertile soil. Moisture. हाँ यही मैं explain करूँगा. Moisture retaining. If you don't understand the word retaining, please write that word holding. Moisture holding capacity. And please write the word there, not word, two alphabets GR. What is GR? Give reason. हाँ इसका एक आंसर भी दूंगा in the next class. हाँ क्यों होता है उसका नाम. Crops open bracket cotton sugar cane mainly and oil seed. बस ये टोबैको वगैरह हमको नहीं चाहिए. चाहे तो जवार भी ले लो. Let us go to red soil. Any problem with black and alluvial soil? Anybody? Shall I go a little bit fast? Okay, red soil. Point number 1. Decomposition of old crystalline or metamorphic. उतना ही underline करना. Areas covered: Deccan Plateau, Tamil Nadu, close bracket in Karnataka. Color red. Many a time they confuse you. Laterite soil का भी color red ही होता है. But they won't ask you lateralized red soil. Any idea why? आप लोग explanation के बाद बोलना. Composition, open bracket, rich in iron, close bracket there only. ये soil जो red दिखता है ना वो पूरा deficient soil है. Open bracket देखो सब में deficient है. Lime, nitrogen, potash, phosphorus and humus. Characteristics: red soil, underlined from its color. Second point, porous iron oxide. If you have seen any iron particle, not iron object, which is क्या बोलता है English में rusted, वो पार्ट का कलर और ये सॉइल का कलर एग्जैक्टली सेम है. मतलब ये सॉइल में सबसे ज्यादा क्या है? आयरन ऑक्साइड्स. वेयर इज लैटराइट सॉइल वो रेडी दिखेगा. वो सॉइल बना है लीचिंग से, केमिकल एक्शन से. दैट इज व्हाई लैटराइट सॉइल को हम लोग रेड सॉइल नहीं बोलेंगे. समझा? लेट्स प्रोसीड. इट डील्स सॉरी इट इज आइडियल फॉर अंडरलाइन ड्राई फार्मिंग. दैट्स एनफ. क्रॉप्स wheat, rice, cotton, sugarcane, close bracket. Laterite, weathering of rocks under monsoon condition. Climatic भी हटा दो. Heavy rainfall and high temperature. Point number 2. Areas occupied, open bracket, from Assam hills, close bracket, in West Bengal. Orissa छोड़ दो. Red color is red. उधर से तो question mark डालो. Laterite soil red है, but they are not calling that as which soil? Correct. Composition: iron, silica, उतना ही करो. Rich in poor नहीं चाहिए. Lime, nitrogen and humus. Characteristics: underline coarse texture and soft. Underline friable, that I'll explain by next class. Just open this. Next one, red due to the presence of iron oxide. Next point उसी में divide कर देना. Soluble plant food like potash are removed. Leaching के आगे. Let it be. I'll switch on. Write the next point. Write the next point as well as it is porous soil. Only underline the word porous. Silica is removed. Circle that word chemical action. Pour in lime. This question they will ask you. Acidic in nature. In chemistry, you might have done what is acids and alkalis are. Ye circle karo, the word is leached. And remind me the next lecture, I'll explain that. Crops associated are very good for tea and coffee, rubber and cashew. Close the bracket. Anybody knows what is this tapioca? It's like a root, you go underground to it. ये जो chips मिलता है ना, next time you go to any Kerala stores, ask them tapioca chips. Kerala मतलब ये chips ही बनाते रहते हैं लोग. But not that one. That is also one fiber type. But tapioca chips रहेगा, it looks like potato only, but it is not soft like potato. कुछ अलग taste, and that is a tapioca. I'll show it in the video, maybe next class. Let us go to next, soil erosion. उधर एक question लिख दो. Explain the reasons for soil erosion. उधर एक column दिया है ना, इधर ही लिख दो. Explain the reasons for soil erosion. Did everyone? Types. उसमें capital A, B डाल देना. First one, by water A, sheet erosion B, rill erosion C, gully erosion D,
Leaching छोड़ देना. They will not ask you leaching. Now, if I want to explain soil erosion, the line they have given, but I want you to tell it in a simple line. उन लोग ने detachment, transportation बोला. What is this word detachment of the soil? Is it? Separation, breaking of soil. I can get any good definition of soil erosion. Anybody? हाँ. एक काम करो, लिखो फिर नोटबुक में. नहीं है ना, लिखना. Refers to soil erosion. लिखो. Refers to washing away of top fertile. लिखना भाई, क्या हो गया? Soil erosion. I'm giving meaning. Kaushal writing. Good. Soil erosion refers to washing away of top fertile soil by different agents, dash wind. Air मत लिखना, wind ही लिखना पड़ेगा. Correct? हाँ, wind, running water. हाँ, उधर भी running water लिखना पड़ेगा. Glacier action. So we have 2 minutes to go. I'm not going to explain anything. Only ये types आके notebook में copy करेंगे, वो भी अभी नहीं, after the break. Okay, you can relax. By the time the bell goes, we can move. And have your breakfast, whatever chips जो भी लाया है, calmly and coolly, और कचरा वचरा कुछ नहीं दिखना चाहिए. फिर क्या बाहर जाता है? गुड यार. इधर किधर मिलता है? ये 15 मिनट में ये काम हो जाता है यार. ये पहली बार मुझे ये सब नया आइडिया है. गार्डन किधर है? इधर तो खाने ही जाता ना, और भी कुछ गार्डन में दिखता है एक्टिविटी. 15 मिनट के अंदर. ग्लेशियर के आगे क्या बोले थे? ग्लेशियर के आगे फुल स्टॉप, ब्रेक. थैंक यू. आराम से मैं जानता. हाँ, आइए आप लोग के लिए दरवाजा. जाइए गर्ल्स मूव. ये देखो, वो लेकर आएगी ना बाबा. हाँ, थैंक यू. हाँ, छुपा के क्यों? हाँ, प्लीज. Shall I go? हाँ, thank you.
All noise was coming till our fourth third. ठीक है वो सब बाद में. Let's start with our soil. Come on now. But ये 15 मिनट के अंदर इतना करना जरूरी है क्या तुम लोग? Did you check it? Male dogs only. हाँ 1 मिनट लड़कियां. 15 मिनट का जो ब्रेक है ना, एक मेरा आइडिया यूज करो. Sit inside the AC room. It's so big room. आराम से खाओ. Put your head down. है ना? Instead of going and playing in that sun and coming. Now I don't want to step it into your 15 minutes break world. Let us come back to our soil world. So everyone wrote soil erosion. Let's proceed with the types. They will not ask you detail, only you understand what is soil erosion types. Shall I? Everyone is back. एक दिन है ना ऐसा करो कि ये 15 minutes break में जाके बिना खेले एक दिन जो मेरा आइडिया फॉलो करो. You will feel very relaxed to attend the lecture up till how many? 4:30. नहीं मेरे लेक्चर्स में भी जबकि मैं यौन करने ही नहीं छोड़ता हूँ, फिर कहाँ से नींद आएगा? हाँ क्यों बार बार उसको देख रहा है? I am back with the soil erosion by water. Is every bench having volume? Every bench having a pencil as well? Shall we jump start? चलो. Because I need to finish that climate का भी कुछ points बोला ना उसने, वो भी दूंगा मैं. चलो write down, not write down. Mark it. The main factor of soil erosion. Underline that word, running water. Open bracket includes sheet erosion, rill erosion, gully erosion, leaching, seashore erosion. उतना ही mark कर लो. I will show all the erosion in a video, small video that I'll tell you. Next, sheet erosion. Underline. Gentle slopes. Slow removal of thin layer of soil. Then underline rainwater, thin layer. I'll tell you orally. If I get a good video, you can watch it also. Now, when you see this word sheet erosion, normally on the slopes of the hill. And if you have seen slopes of the hill, the water tries to move in a zigzag manner, meandering bolte, correct? And entire big layer of soil will be taken away by the water. That is called sheet. Abhi I say this is A4 size. You know what is an A4 size? But when I take a chart paper of a big size, imagine karo agar ye erosion hota hai and a big chart paper, which will be much bigger, that chart paper. So imagine that is which erosion? Sheet erosion. Samjha? That's what. Second, rill. Sheet erosion continues, open bracket, for long. The silt laden runoff. Circle that word silt. Alluvial soil में हम लोग ने silt बोला. Mainly वो silt for many finger-like shaped or grooves. Underline that word finger-like. If you are looking at this, I can say this entire area has been taken by these waters like this. So I call this is sheet erosion. Sorry, sheet erosion. And rill erosion, what I'll do, these rills are formed. अभी इधर सब soil है. Only this part is removed. Correct? Finger-like structure. Next, gully erosion takes place when, underline, water runs down or gushes in distinct path. अभी ये कैसे दिखाऊं? It will be like this. You can see literally. कभी-कभी तो ये gully erosion इतना deep हो जाता है, we can literally see it's more like a drainage path. So this is gully erosion. Correct? And this is sheet erosion, and this is which erosion? Rill erosion. Abhi for the time being kar lena. If I get the wonderful video, you will understand what it is. Next, leaching. Process of open bracket. Percolation by which minerals are washed down. Close the bracket. Now, who can tell me the meaning of the word percolation? अरे बोलो. उधर लिखो. Underground water seepage. Seepage. You understand seepage? Underground. Washing the minerals down by collecting the lower layers. Underline lower layers. Close bracket. Shore erosion. Sorry. Soil erosion. Underline on coastal areas mainly. Circle the word coastal. Strong waves and tides. अभी आपको लिखने बोलूंगा. You are only writing the punch words or the main words. बस उतना ही. Next.
stream or bank erosion. Banks of streams are cut down by the flow of stream. Understand what are banks are? River bank देखा है, उससे भी बड़ा cut करता है. That will be which water then? River water. Write down this in your notebook. Only 2, 3 words with the heading. I'll try to find out the video if I get it. No talking. Silently write the video. Sorry, silently write the. अच्छा ठीक है, ठीक. Or no sentence also I require. You write only the words. Correct, correct. ये वीडियो को नहीं बोला. अच्छा ठीक है ना, तू कर अभी चुपचाप. I want, by the time I find the video, you should finish it. जगह नहीं तो बना. सर आपका वीडियो खत्म हो गया. नहीं खत्म नहीं हुआ, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. बैठ भाई उधर. I am bringing a video with this soil erosion type. Yahoo क्यों आया? I can't say that some teachers make their channels only here by putting. मैडम जी लिखते रहिए, लिखते रहिए. You will understand what is. ठीक है लिखो. All types लिखता हूँ. Here it is. The same video I got it in the other batch. Come on, keep writing. What is this admiration club? लिखना भाई. Is admiring the screen here. लिख लिए हैं. हाँ रुक जा. Does it have a video also? या मुंह से बोलते जा रहे भाई. Let it be. Even the madam was asking. Kaushal. Yes sir. Why are you connecting from 2 devices? क्या तकलीफ है तुझे? अरे सर एक में लैपटॉप है और एक फोन है. बट अरे में क्या है? हरे में हरे बोला तो फिर हरे लेके चले जाऊंगा तुझे. अरे हरे नहीं, अरे. हाँ वो नहीं बोलना है. डिस्कस करेंगे एग्जॉस्टिव डिस्क्राइब के हम लोग डिस्कस करेंगे रिल इरोजन के बारे में. रिल इरोजन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, शीट इरोजन क्या होता है, इन तीनों में क्या. Just listen just to understand. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्लैश इरोजन के बारे में. डिस्कस. सर मेरे को आवाज नहीं आ रहा. अच्छा रुक जा, तो आवाज मत कर, मैं कर रहा हूँ. और इंटरनेट इज आल्सो थका हुआ है. हमने जियोमॉर्फोलॉजी में अच्छे से पढ़ लिया था, बट अगेन इसमें हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे स्ट्रीम इरोजन क्या होता है, बैंक इरोजन क्या होता है, सी शोर इरोजन क्या होता है. तो ये सारे गूगल ऐसे जो है ना रन ऑफ, मतलब सोचो अगर पानी गिरेगी तो नो डाउट पानी तो. मुंह बंद करता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Are you seeing this? Rills are formed, correct? And these are slopy regions. I think I have gone to some interior parts of Maharashtra just ahead of Lonavala, and so there are slopes of the hills and ऐसा erosion है. Erosion मतलब ऐसे cut किया है पानी ने. So these are the rills formed. Is it finger like stretchy? So that is rill erosion. Let me only explain. भाई साहब का हिंदी बहुत बढ़िया है. हाँ. Now you look at this word gully. The same rill erosion, if it takes place for a longer period of time, are you seeing the cut is big? रुक जा उधर कुछ. हाँ क्या मैं आऊं उधर? ठीक है, आ जाओ. गली इरोशन में आ जाओ. Rill erosion, initial stage, if it continues for a longer time, okay. हाँ देखो. Now they are explaining the word sheet erosion, but he has put the word amalgamation. What is amalgamation? When many gullies are amalgamated,
it will lead to the sheath. अभी ये पूरा जो part है, the entire stretch, acres and acres of Amalgamated का land, मतलब connected. Many gullies will be connected and the entire sheet will be removed. Sheet मतलब ऐसा नहीं कि paper sheet है निकल गया. Understood? Big stretch of area, soil erosion. So that is called as sheet erosion. Okay. Then I time the format. हाँ. Is it there for your portion? नहीं है ना? नहीं है, नहीं है. Keep helping me with that cursor. Is it this erosion there? Now the word is stream and bank. Look here. Yeah, originally it was a piece of land, but suddenly you can see a stream coming out. And normally ये India में भी है, European countries में भी ज़्यादा दिखता है, and it's very neat and clean. What does it mean? This part could have been covered by soil, but the erosion is so thick, it has made a new stream of the river. And look at that, it is mature stage, that is meandering tendency. That I'll show it on the board. When that entire river is huge, when it tries to take a U-turn path like this. You understand what is this path is called as? Meandering path. तो ये वैसे ही कट करेगा. And normally ये जो flash flood है इसी का है. 2 घंटा या 3 घंटा rainfall होता है, suddenly you can see a flood. But these are flash flood. Flash flood matlab if there is torrential rain and if that area is cut by which stream and river erosion. Samjha? Is this is clear? Just help me. That is what he is drawing and showing. Wait. अभी शायद आगे गए. देखो. Now if I say the word sea shore, I think we got it. This seashore was up till here. Now the sea has taken up till here, or it might even cross this area also. These are all very slow process, but sea is doing it. So if I plant you here, this was the mark. Are you seeing? Here tak. But my seashore was here. But abhi kya hoga? This is cut. Again it will erode. Again it will erode. This mud which you are seeing might come up till here. So this is nothing but it is sea shore extending. Maybe next due maybe course of time you can see ये जो sea beach है ना यहाँ तक भी आया है. आप उतना दूर क्यों जाता है? If you have any family friends that near to marine lines and जहाँ उनका sea face building है, मेरा building नहीं है उधर. I used to go to teach one of PhD students long back, and उनका जो बंगला था exact sea facing था. And every time when I go to teach him, he will close that windows. Second या third floor में है, तो मैंने लगा इतना अच्छा sea face view है, so why don't you keep your? Are you understanding? So he told me, sir, if I keep it in one day, I will get close to half to 1 kilo of sand into my class, into my house. तो वो wind इतना strong है. I think किसका flat है उधर? संजय खान, that टीपू सुल्तान का जो रोल किया है, ऋतिक रोशन का भी मैंने सुना है, उसी एरिया में है. मतलब सी फेस बिल्डिंग. तो जितना भी सी का जो विंड रहता है, it picks up all this loose mud and try to deposit in your house. Are you understanding? So that is sea shore. That's done. At least you got a picture. Chalo, let's proceed with. What is the next topic? हाँ. तो एक भी पिक्चर में ठीक से नहीं दिख रहा है. Two pictures, yes. Okay, let us write that introduction part. Write in your notebook that same heading. Soil erosion by wind, is it? Write down. Erosion of soil. I'm giving 2 lines. Erosion of soil due to strong action. Write down. By wind. Uska meaning there. Erosion of soil due to strong wind action. Thereby, strong wind action, thereby reducing the top fertile layer. Reducing the top fertile layer.
reducing top fertile layer. One more sentence. It mainly takes place near to the coastal regions or near to the coastal regions or regions affected by It strong mainly take place. Ah. उसके बाद strong coastal regions or regions with strong wind action. Regions with strong wind action. Chena. Strong wind action. Change the para. Now look at them. It's on which page number? 89. You see it occurs through saltation and soil creep due to human. वो दोनों सिर्फ heading causes डाल दो. Sorry, ये मत डाल दो. Causes डाल देना and write only the heading in your notebook. सर आपका वॉइस अटक रहा है. Causes. अभी okay है? सर बीच में कट रहा है. ठीक है, रुक जा. Might be some network issues. Just wait. We'll get habituated. Point number 1, you write the heading. Point number 2 in your notebook, and I'll explain shortly. Girl, you to write. Written. So, make sure. लगा बहुत ईमानदार बच्चा है. अभी नामदार हो गया. Everyone has to write. Right? तू उसका मुंह क्यों था करे? लिख अभी. Hey, you didn't have the volume. You want mine? This causes all the headings putting up till deforestation. Correct. Only heading. I speak normal. And now is the voice clear? Kaushal. Thank you. Told you our technical सर हो things गया are. habituated. हाँ, पूरा heading लिख दे. Soil erosion का causes heading लिख दे. After writing that, you can write prevention, which I am giving. Prevention I am giving. बेटा, very hot is it? चल रहा है फिर क्या? Fiddle and all this stuff. जा रहा है ना नीचे. उसको बोला कर 24 से नीचे. Shall we? Prevention point number 1. Write down. Introduction of. I'll be going slow, but I won't be repeating. Introduction of terrace farming. इधर से देख के लिए. It's on paper 90 only. Introduction of terrace farming on hill slopes. Next, hill slopes. Contour, second point, contour plowing. Contour plowing helps in reducing the speedy runoff. Contour plowing helps in reducing the speedy runoffs. Runoff of water और क्या? Speedy, reducing the speedy runoffs. Next point. Recently. Next point. Recently, contour plowing. Shelter belts. Contour plowing, shelter belt, cropping. ये सब मैं explain करेगा.
belts. Strip cropping are introduced hyphen at government and individual level. Are introduced government and individual level. Next. Next point. Soil erosion can also be prevented by construction of check dams. Construction of CHECK. Check dams and plugging of gullies. Did you see gully erosion? हाँ, बस उसको stop करेंगे. ये सब मैं explain करूँगा one by one. By constructing check dams, and plugging of gullies. Next. Afforestation program. Promoted through. चिक डैम्स क्या होते हैं? मैं बताऊंगा ना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया, बताऊंगा पूरा. Afforestation program promoted through Vana Mahotsava festival. I am writing that word Vana Mahotsava. At village level, Mahotsava. अच्छा, VA रहेगा. Hindi word to English is a trouble. At village level. Next point. Spreading of awareness. How many points are there? Close to more than 5, na? Spreading of awareness against the harmful effects of soil erosion. Now relax, read all that. How many points are 6, 7, 6 points. And we'll go one by one. I'll explain fully. Correct? Those who have left any points, please copy down right now only. Shall we? Or shall I explain first conservation, then come back to this? पहले causes कर लेते हैं. Yes, last boy, read for me. First point. वो अभी लिख रहा है. वो उसको पकड़. Soil erosion का first point read करना. Causes. That I've given in the notebook. Sir, I knew you are not writing. क्या हो गया? उसको दे दो notebook. Yes, my collar book. पिछले 10 मिनट से यही काम चल रहा है. Read first point. Now look at this diagram. When I use the word terrace, this is hill slope. Normally it is done on hill, not on a mountain. Can we cut the mountain? Not possible. Now they are cutting more like a staircase of your building. Now what it will do, on one side, if I see the rush of water, this is speedy. Are you seeing it? What will happen then? This side, what will happen? Soil erosion. Now let us see the water. What are we reducing? We are reducing the speed of the water. Now will it check the erosion? Right? Will it check the soil erosion? अच्छा ठीक है, no क्यों बोल? She says only a little bit. How do you know little?
अच्छा simple पूछता हूँ. Wait. हाँ. Do you this side soil erosion will be more? Do you think this side soil erosion will be less? बस इतना ही जानना है. Little है, more है, nobody is asking. Same, my students ask me, sir, what is this word contour flowing? Try to bear with my little bit of diagram. I was very bad at drawing in my school days also. Okay, हाँ, ये पेड़ ही है. हाँ ठीक है ना मान. फिर क्या लगा? कैंडी स्टिक से क्या? उधर घोंसला लग रहा है. हाँ. Now this is I'm saying 150 MSL, 100 MSL. This is 50 MSL. Now who can tell me what is MSL stands for? Wonderfully wrong. आप लोग जब हिल स्टेशन में with your car you are going, जैसे जैसा हाइट ऊपर जाता है, they write MSL, meters above sea level. Now what are these contours? These are imaginary lines joining the places of equal height. अभी what is the good thing about our hilly regions? जो altitude पे जो tree support करता है ना, वो low line पे नहीं करेगा. Climate अलग है, soil cover अलग है. So at every altitude, सर एक ही माउंटेन पे अलग अलग ट्रीज. just to look colorful. जैसे तू वो सॉफ्टी खाता है ना, वैनिला वाला चॉकलेट बाहर से, वैसा. So now you understand the drills here. What the government has done: lower level different trees, higher level different trees. But now then, when the water is gushing out in all direction in a rainy season, these roots of the plants will might hold the soil. Are you understanding? इसको हम लोग contour plowing बोलते हैं. In China, I am not saying Japan, they do full-time farming even in the hill slopes. अभी पता नहीं वो कैसे plowing करते. अभी China can do anything. Now they have challenged the world. They can create artificial sun also. अभी I don't know Chinese people अपने आप को ने मालूम पड़ा suddenly किसी building का. They have done plastic rice, plastic egg, and Americans को 15 साल से काऊ का मीट जाता था because they love that. अभी recently Americans को मालूम पड़ा 50% of the meat is artificial meat. You understood? काऊ बोलेगा मेरा भी तूने artificial बना दिया. So Chinese are anything and everything. So at least in soil erosion, China का जो technology है ना very good. But we have to little bit be careful to follow it or not to follow it. But then we have a country called Israel. Very small country, but their technology is superb. They say in a Rajasthan desert area, you can grow even sugar cane. Yes, how? बोलो अभी अपना scientist लोग जाके बोलो. Many Indian students study in Israel, engineering, science, good studies. They apply a petroleum jelly over the entire farm desert, and रुक जा मैं बताता हूँ. Then they have to wait for next 6 months, and then there is a technology water it, and then they try to make the soil sticky. Nobody have remember I've asked you to explain me black soil, moisture retaining. 15 मिनट में पूरा दुनिया ही भूल जा. You remember black soil was moisture retaining. मतलब when you see black soil from the top, आप देखा रहेगा पूरा cracks है, or it is dry. But try to twig it with a pencil. Inside that layer, it is very wet. Guess why or how? कभी देखा black soil ऊपर से cracks रहेगा, अंदर से sticky है, because it has lots and lots of certain content which absorbs the water and keep it. I don't know how many have seen some fish that they call it as catfish. Yes. Catfish को आप वो कीचड़ में थोड़ा सा पानी के साथ डालो, वो महीना जिंदा ही रहेगा. It will not die. I have seen some of the fishes, head is cut. It is alive for next few minutes. So catfish can live without. Correct. So this black soil has this highest moisture holding. Alluvial soil सब 2 हफ्ता अगर rainfall या पानी नहीं दिया ना वो सूख जाए. Black soil नहीं सूखेगा. समझ में आया? Let's proceed. Third point or fourth point. Sorry, she's going to read all the points. That's easy for me. Did I explain contour? Next one.
Now look here. Now we have farms here. Normally this is done in south where lots of the soil erosion is very rampant. अभी ये मेरा main farm है. 1, 2, 3. अभी what I'm trying to do is strip cropping. And I leave some part of the mainland. Big grasses which are 3 to 4 feet high. So when this winds try to move across, इधर का जो soil loose particle उठा के इधर deposit नहीं करेगा. समझा what I'm saying? Out of the 4 or 6 strips, they might have do cultivation in only 3 strips. बाकी 2-3 strips only grasses ही उगाए. Shelter belts. If we generally go to villages, if this is a pond, you might have seen green trees normally in and around that area. Why? 2 things. It will reduce the rate of evaporation, cooling. Second, अगर पानी अगर continuously उस pond में या lake में आ रहा है, it will not do the erosion from that region. This is called a shelter belt. Belt of trees grown over. Next. Soil erosion can also be prevented by check dam and plugging of. No, I think he asked me what is the meaning of the word check dam. I mean, dams are generally a costly project. I can't construct dams anywhere and everywhere. Look here, this is a huge river which is going to flow in a rainfall season and going to cause flooding. अभी ये individual नहीं करता है. The government officer who are trained, they will cut the river in such area, not very big cuts, so that when there is water flowing above the which level, danger level, पानी slowly बाहर आ जाए and river अपना method से flow करे. Whenever it is above the danger level, the water will come. Are they constructing any dam? It is called as a check dam. अब बोलते सर चलो सर हम कल रात को जाके सब जगह कट मार के आते हैं, फिर मालूम पड़ा वो flooding ही करेगा. And rivers are very dangerous, especially you have gone to Damodar, this Ganga and this Yamuna, and you go to Odisha. Anyone from Odisha here? Yesterday I was listening to the speeches of that Zalansky. He was speaking in his local language, but वो English में translate हो रहा था, and वो बार बार Odisha, Odisha, Odisha बोल रहा था. One of my friend called, अरे यूक्रेन में Odisha कैसे पहुंचा? And they have a territory which is called Odisha, Odisha, O-D-Y. और हमारा जो region है, it is Orissa, but they write it as D. You don't write R. Odisha. Have you heard about Odisha? What is that river which overflows every year? Ganga in Odisha. It is called as River Mahanadi. And it is called as sorrow of Assam and mainly Odisha. Every year this Odisha is overflowing. Dams will be बनाए, but it cannot be stopped. You have seen even some inside our own Maharashtra. I haven't gone too deep. You have Pain Ganga and Narmada River, which are generally dangerous during the rainy season. Correct? So ऐसा check dam बनाता है, but it is done by a technical expert by the government fellows. So these are called as which dams? Let us read the next one. Come on. Now when you use the word afforestation, I think you and me are just waste. Are we? आप लोग से पूछ रहा हूँ. Are you? Then फिर क्या किया conservation के लिए? Maybe a birthday of yours. Maybe the marriage in your family. Maybe you have your grannies. You make one tree in their memory. Maybe you got very good marks or anything. So at least आपके life, अभी तो you are very young. Maybe next 50 years, 60 years or 70 years. 1 year try to plant even one tree in your own locality and let that tree grow. आज नहीं कि आज सर ने बोला तो किया, 2 दिन के बाद निकाल के फेंक दिया, बस हो गया. Good, but is it growing? हाँ तो ठीक है ना, मैंगोस आएगा तो दे हमको. So we always believe you and me be a big part. अभी देखो हमारे पास कितने students हैं, इधर नहीं स्कूल में. Even you plant only one tree, at least one school student will plant 1,000 trees. And you are helping not only soil erosion, you are helping to reduce the global warming. There are so many actors and actresses. I haven't heard about Bollywood क्योंकि इनको तो style और fashion में और गाड़ी चढ़ा के किसी गरीब के ऊपर चढ़ाने में time नहीं. There are so many South Indian actors and actresses who have vowed every actor is doing 5 lakh trees in an year.
and looking at them. कल है ना सलमान खान है ना पनवेल में झाड़ लगा रहा था, मालूम है ये काम वो नहीं करता वो. So if Sallu becomes a role model to plant trees, how many fan people will be doing that same? But Salman Khan है, वो अगर वो करने लगा तो फिर he will not be the Salman Khan. हाँ जो भी है. I'm not saying that. Are you understanding? So this is, he has asked me plugging of gullies. Did you see that picture of gullies? अभी देखो what the military people ये generally करते हैं. They have the sacks of sand. अभी देखा है? अब मुझे याद है जब 26/11 अटैक मुंबई में हुआ था, पनवेल स्टेशन से वीटी स्टेशन तक बेचारा 2 पुलिस वाला को सैक के बीचों बीच डाल दिया. मतलब एनी टाइम रेलवे स्टेशन में अटैक हो सकता है. बेचारा वो हेलमेट लगा के गन लेके, एक 6 महीना था, फिर एक 6 महीना था, उसके बाद गायब. एंड ही विल बी हैविंग सैक्स ऑफ सैंड. देखा दैट मिलिट्री फेलो विल बी इनसाइड. ये जो सैक्स ऑफ सैंड है ना, इफ यू आर सीइंग गलीज लाइक दिस बिग, ये गवर्नमेंट का आर्मी पीपल भी करता है ये काम. दे गो एंड प्लग इट. यू नो व्हाट इन बाय प्लगिंग इट? They are depositing these huge sacks of sand. गली को भर रहे हैं वो लोग. That is nothing but, oh my God, 2 more lectures. How you guys are going to give a picture to the concerned teachers? Pity on the teacher. With my so many best efforts, they are giving me such a positive signal. चलिए, let's proceed. Is there any point left still? What is it? Spreading of awareness. सर वो ब्लैक सॉइल वाला आप बताए नहीं. हाँ बता रहा हूँ. Now I use the word awareness. I think आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा बात कान में डाल देने को. कल है ना वो टीचर है ना उधर कुछ. Within no time it will be spread to the whole school. हाँ वो जो भी रहेगा, I don't know. But if I tell you any good news, we are least bored. कल है ना वो इंग्लिश टीचर और वो ज्योग्राफी टीचर दोनों कोने में क्या बात कर रहे थे. Look at the awareness. प्रिंसिपल के कान तक जाएगा तुरंत. And the principal, come here. Yesterday, we were discussing topic, but कोने में क्यों? So I spread the awareness in a very simple way. The awareness is related to soil. नहीं sir, ये काम अच्छा नहीं. आप और कुछ काम दो. What is awareness you are spreading? Putting it in the textbook, talking to your friends, है ना? If your news channel, अर्नब गोस्वामी अभी soil erosion का debate कर रहा है. कोई ad नहीं मिलेगा उसको. But he's debating on Russian issue, you will get an ad. He's debating on Cholbenoi, that is Bengali madam, then he will get an ad. You understand what is ad payment, na? फिर मोदी आएगा या जाएगा 2024 बड़ा डिबेट. बट मैंने कभी बोला सर कभी ज्योग्राफी का भी लो. उसने बोला क्या टॉपिक है? मैं बोला सॉइल इरोशन. एड ही नहीं मिलता मुझे, बिकॉज ही हैज टू रन द प्रोग्राम. तो आप कैसे स्प्रेड करेगा अवेयरनेस? इन अ सिंपल वे. लर्न करो, आंसर में लिखो. If possible, at least you spread to only one person. और कल है ना अलगेश का लेक्चर बहुत अच्छा था. बार बार वो बोल रहा था सॉइल इरोशन को स्टॉप करो. बट कैसा स्टॉप करने का वो नहीं बोला. एटलीस्ट इतना भी अपना दोस्त को बोल दिया ना, वो भी वही बोलेगा सॉइल इरोशन स्टॉप करने का, बट कैसे स्टॉप करने का उससे पूछ. So what does it mean? You are spreading the awareness. Every year our UT student gets the very best marks. All thanks to not to the teachers, their hard work. टीचर्स भी है, छोटा सा रोल है हमारा. एंड यूटी का उधर एक छोटा सा फंक्शन हॉल है जहां हम लोग एवरी ईयर करते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पेरेंट्स और बच्चों का जो एक्साइटमेंट है ना बहुत ज्यादा रहता है. हम हमारे पास भी आते हैं, गलती से मिलते हैं एंड पेरेंट्स बोला अच्छा आप अलगेश है? बोला हाँ भाई. एंड दे आर वेरी हैप्पी. बहुत बोलता है आपके बारे में. एंड दैट मेडल दे गेट इट एंड अनुभव सर आल्सो डू इट विद ग्रेट यू नो ऑनर. 100 out of 100 so many students, it's very difficult to keep on awarding them. एंड फिर उसके होने के बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है, लंच पार्टी होता है. देन पेरेंट्स कम एंड मीट अस. उस शाम को जाके पूरा बिल्डिंग में वो लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर देते. व्हाट इज दैट अवेयरनेस? वंडरफुल पार्टियां, लंच भी बढ़िया. पार्टी में क्या हुआ वो सब छोड़ देंगे. और मैं साड़ी जो पहन के गया था सब लोग ने पूछा. बच्चा ने किस टॉपिक में टॉप मारा वो नहीं बोलेगी, सब बोलेगी. हाँ फिर एक मैडम ने पूछा ये कहाँ से लिया? मैंने बोला यूएस से लिया है. और निकला उल्लासनगर का माल. बट व्हाट आई एम सेइंग, एटलीस्ट शी इज स्प्रेडिंग द अवेयरनेस. तो ऑपोजिट वाला अच्छा यूटी इतना बड़ा फंक्शन रखता है, हाँ लंच भी फ्री था और एसी बढ़िया. मतलब मैडम अंदर का भी प्रोग्राम बताना आगे हम क्या करें, वो लोग देख लेंगे. एंड फोटो में मैंने ऐसे ऐसा पोस्ट किया ना, अभी फोटो आएगा तो मैंने बोला है रुको फोटो आएगा.
At least is she spreading awareness? That is correct. So awareness, mouth to mouth publicity is the best. And पूरा दुनिया में इंडियंस के जैसा कोई नहीं है ना. इस रो में अभी एक छोटा सा बात बोलूं, within 2 minutes it will spread to the whole class. How? Awareness. चलिए, let's proceed. Any point more? Okay. If for black soil, there is one page. Where did I made you to write? एक क्वेश्चन लिख ही लो because it comes in the board exam. Black soil is high moisture retaining capacity. Black soil has high moisture retaining capacity. Or you can write the word moisture retentive. अगर एग्जाम में आया तो सेम मीनिंग. Has more high moisture retentive or retaining capacity. मैं दे रहा हूं, मैं आंसर दे रहा हूं, पूरा आंसर दे. कौशल, बंधु, happy? I'm giving the answer for you. Thank you. Black soil, point number 1, can hold the moisture. Can hold the moisture for longer duration of time. Careful. Can hold the moisture for longer duration of time because or since high silt and clay content. Time dash we check point once. High silt and high clay content. High silt and high clay content. अच्छा ठीक है, अभी कर. Second point. Once wet, it becomes more sticky. You understand what is sticky? हिंदी में मैंने सुना चिपको बोलते हैं आप लोग. Soil. It becomes more sticky. Third point. The top layer dries. The top layer of the soil becomes dry. मेरे पे उधर कैसा है? The top layer of the soil becomes dry, but the subsoil remains wet. Wet. Last point. Presence of clay. A repetition है, but थोड़ा सा change करके दे रहा हूँ. Presence of clay is a major factor. Presence of clay is a major factor in making black soil. AS. क्वेश्चन का वर्ड लिख दो, या तो लिखो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी और मॉइस्चर रिटेंटिव लिखो, दैट विल बी बेटर. मेकिंग ब्लैक सॉइल एज मॉइस्चर रिटेंटिव, दैट्स इट. रीड करो. लेट मी सी 2 person answering this question right now without seeing. तो दूसरा वाला क्वेश्चन कौन सा दूसरा वाला? बोल तो सही, टॉपिक क्या है? Why black soil is not rich in humus? वो भी दे देता हूँ. पहले ये तो करेंगे रिवीजन. Yeah, I don't know about next Thursday ना today. My first lecture again, I think nobody will go out for 15 minutes break and जाके बाहर जाके खेल के वो कुत्ता भीगा हुआ जैसा अंदर नहीं आने. Everyone will be inside the class and that's my order. टिफिन से तो मैं भी इधर ही बैठ के हम लोग, है ना. वो चौथा या फोर्थ लेक्चर में जो करना है करो, बट सेकेंड लेक्चर का बीच में जाकर नहीं आए. इज इट अंडरस्टूड? हैप्पी? And I'll make the peon to keep the AC to the max because this is not the time to go out and play and come back. ये देखो, जो एरियल से धोया हुआ लड़का जैसा पहला दिख रहा था. हाँ, आप लोग ने उसको व्हाट्सएप किया था इसके पीछे से. कम ऑन
अच्छा वो बाद में. Come on, who is ready with the answer? Same. अरे ये बच्चे इतना इंटरेस्टिंग थे, स्लोली टर्न हो रहा है. चलो फर्स्ट पर्सन. वेरी गुड. पूरा पॉइंट चाहिए. हाँ यार इतना तो मैं भी बोल देता. ऑल द पॉइंट्स विदाउट सीइंग. इन अदर ब्रांचेस सम पीपल टोल्ड मी सर मैं माइक में और कैमरा में आके बोलेगा, चलेगा? आप लोग ऐसे नहीं बोला. हाँ मिलेगा ना, व्यूअरशिप भी मिलेगा, ऐड भी दे रहा हूँ. बीकानेर समोसा. एनीबॉडी रेडी? हाँ गुड. Black swan has high moisture retaining capacity because of the presence of silt in clay. वेरी गुड. As the soil gets Ah, more I wet, see. it becomes stickier, ओके. and the presence of clay is a major factor for the black soil being moisture. You missed one point. Very good, very good. At least she told. एक मिनट. हाँ. पहले पॉइंट ही ड्राई बोल देगा तो कैसे चलेगा? अच्छा ठीक है ठीक है. Go on, go on. I'll ask. Those who have raised the hand, they can put down. I have seen. कौन था? हाँ. Next. Black soil have the high retaining capacity because it has high content of clay and silt. The second, it is I say the third one. Relax. आराम से. Good boy. Let's give it to Kaushal now. Sit down, sir. Good. Kaushal तू बोल. Without seeing. सर क्या? Answer. अच्छा. Black soil has high retaining Nobody will pierce it. capacity of moisture. Black soil, if it once get wet, it become more stickier. Okay, very good. Good. हाँ. एक मिनट रुको उसको. उसका नाम क्या है? मनस्वी. Come on, Manasvi. Huh? We are talking about black soil. Becomes bed. Good, Manasvi. Learn bit good. हाँ. वेरी गुड. सर देखो अपने ओन में बोलने का ट्राई करो. गुड. नेक्स्ट इज Soil high moisture retained, it can hold more amount of moisture because of say high content of silt and clay, and once it becomes wet, then it स्टिकी. गुड. नेक्स्ट इज others read करो ना. Why are you? Very good. Sit down. Yes, next person. Mm-hmm. Okay. Making of black soil. Sit down. Last person. I forgot your name. Janvi. Come on, Janvi. क्या बड़बड़ कर रहा है? His friend. What is he talking? Manasvi, you have to tell me 2 more points. Okay, good. Follow. Hey, write the next question in your notebook. Hey, which question you did ask me? Why black soil is rich in humus? Not rich in humus. Please, everyone, write down. By the time she says the answer, why black soil lacks humus? Duration कब बोला मैंने?
Why black soil lacks humus? And giving the answer. Take it, learn. Shall I give the answer? Black soil is rich in. Go down to the black soil. Rich in क्या क्या है वो डाल दो. Which page it is? वो डाल देना. Rich in what? Iron, lime, aluminium, potash, magnesium, and calcium. हाँ वो है, इधर है, पेज नंबर 88 में है. Tell him. Second point. Shall I? Sir, your voice is not coming. Yeah, I will send it through WhatsApp. Voice note. Are you available on Snapchat? Yes, sir. But I am not available. Write down the point number 2. वो क्या है ना कौशल, there is some problem with the internet. That time you might not be, है ना, तो उसके लिए मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग अलग से किया है. भेजूं? अरे हंस रहे थे. But it lacks. Thank you. नंबर किसको? डैडी को भेजूं? But it lacks humus because. अरे बस हो गया. कर. All biceps and triceps exposure is. Washroom में जा, stand in front of the mirror, do all that stuff and come back. I will also learn from you. Right on. But it lacks humus because the parent rock, what is parent rock? Igneous, is of volcanic origin. अभी समझा? Is of volcanic origin. Next point. It is a residual soil. It is a residual soil formed after the weathering of, or formed due to the weathering of, after neighboring. Igneous rocks are formed due to the weathering of igneous rocks, which lacks any. Now who can fill up the line? Dead or decayed animal or plant material, which lacks dead remains of plant or animal materials. Change the para. Hence, repeat the question. Black soil lacks humus. Is it very simple? Let's proceed with the chapter. Then types we have done, page number 89. Soil erosion by wind. I am not going to tell you. हम लोग ने 2 erosion कर लिया. अभी same notebook में only heading लिखो. Are you understanding? Soil erosion by wind 89 and 90. वो हम लोग ने कर लिया ना. Prevention भी कर लिया. Put the heading and write the points as it is. Need for soil conservation. Don't write the full. Write only the points. I am giving the meaning. Soil conservation. First write the meaning and then write the causes or the roots. Soil conservation. I am giving meaning. Refers to. Directly continue कर लो. Soil conservation refers to. Judicious. Okay. Minus 79 now. Judicious, careful, scientific. I can keep on adding adjectives. नहीं चाहिए. And planned use of soil, especially the topsoil. Or you add the word fertile topsoil.
This is the meaning of the word soil conservation. Now write that prevention, as I normally tell you, because soil erosion leads to, Udika? You write harmful effects. Heading ऐसा डालो notebook में. Harmful effects soil erosion. Next, same heading. Harmful effects of soil erosion. You are writing, I am not helping you. Soil erosion. So you are going to become independent. Atmanirbhar. हाँ, मोदी जी के बाद. ये वॉल्यूम में जो दिया है उसी पॉइंट्स को लिखो. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोशन. पेज नंबर व्हाट इट इज? 91. Write down. Kaushal, write down. Hey, you didn't join my economics lecture on Sunday. क्या हो गया था? सर रिजॉर्ट गए थे. मुझे छोड़ के? चल लीजिए. Very good. बस. This is what I don't like Kolkata. तो जो भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर था कवर कर ले. लुकिंग एट आई हैड डन गुड डील ऑफ इकोनॉमिक्स. सर देख लिया वीडियो सारा. अरे वाह, गुड यार. लास्ट वाले क्लास का भी एक और बार देखा है. बार. गुड. You are my student. These are also. नहीं, इनको भी मैंने बोला है मॉर्निंग में. इनको क्या है, उसमें बीच में वो कोई तो ऐड में एक्ट्रेस आएगा तो देख लेगा. नहीं, एक दो वर्ड लिखो ना. वाई पॉइंट टू पॉइंट. चलो हेल्प यू. रुक जाता मैं. इजी से पेंसिल मार्क करके देता हूँ. पूरा क्यों लिख रहा है ना. ये है ना नीड फॉर, ये सॉइल इरोशन हार्मफुल इफेक्ट्स है ना. लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, लॉस ऑफ एग्रीकल्चर, लोअरिंग डाउन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स, लैंडस्लाइड्स. इतना ही लिख. वो तो मैं बाद में बताऊंगा. Only the harmful effects are conservation I am giving. Nine Safi. इधर आए. Loss of top fertile soil, loss of agricultural, even nature, lowering down of underground water, silting of river, landslides. Guys have completed. What is this course of action? Nothing. She was bound to yawn like this. I caught her. Yawning में भी ऐसा actions आता है. Then what? Then dawning. Yeah, but this is so nice, na? Every lecture you are coolly taking the AC. तो टीचर को ऐसा बार पूछने का, तो क्यों आया है? वो मुन्ना भाई MBBS का मूवी देखा है. वो बोलता है बॉडी नहीं दिख रहा है. बोलता है अपना बॉडी खुद ला. अपना छोटा AC लेकर आ जा. अभी क्या कर सकते. तुरंत किसी लड़के ने बोला ठंडा कूल. वो पाउडर लेकर आया. Shall we? Oh my dear girls, conservation I am going to give. वो मत लिखना. हाँ, ये देखो मैंने 1 मिनट है इसको बता. That बच्चा is so tensely writing. ये देखो ऐसे ही लिखना है. Only one word. Point number 1 for prevention. Waiting 2 minutes. I am giving prevention shortly and quickly so that we have that. Sorry. It's okay. मेरे लिए भी overdose हो गया. I have to face the music up till 6 or 6:30 मेरा last time. Conservation I am giving. Hey, what did you say for that climate वाला chapter? उसको बुलाओ. 3 points are not given, ना? Okay. चलो right. Point number 1. Okay. Conservation, you write capital C. थक गया ना? Capital C लिखो. Conservation mainly refers to. Capital C लिखना बस. Conservation mainly refers to long-term use of. Mainly refers to long-term use of available resource,
soil resource to satisfy ever increasing demand. Ever increasing demand. Hey, today's assignment will be climate का जितना भी numericals है, you must solve it in your notebook. I am appointing this person who will check all the boys' notebook before my The arrival. requirement conservation का बोल दीजिए ना. एक मिनट रुक जा. And from the girls, Gauri, you take up the task. She will check all the notebooks of the girls, and who have not done, just report to me. Tomorrow, not tomorrow, next Thursday morning, I want all the question answers of climate in the volume. Volume में है ना वो? Pencil से लिखो, pen से मत लिखना. वो back of the volume में है ना? वो dash dash दिया है. I'll tell you the page number. Wait, boy, I'll tell you that. And then all the numerical, and उसमें बीच में इसने कुछ theory related question पूछा है, वो मैं next week solve करूँगा. जैसे कन्याकुमारी वैसा ऐसा कुछ questions है, वो भी climate based ही है, but वो numericals नहीं है. चलो. Conservation refers to, what did I say? Long-term use of available soil resources to satisfy ever-increasing demand. Second point. Several schemes. Go down to page number 91. Several schemes. पहला scheme लिखना, integrated watershed management. You write 1, 2, 3 also and allowed. पहला लिख लो in from the volume. It's integrated watershed management. लिखो इधर, फिर volume में mark कर लो. Don't write any details here. Come to page number 91. पहला word underline कर लो, central sponsored. Hey, who can tell me what is centrally sponsored means? हाँ, वेरी गुड. उधर लिखो फुल मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का. अंडरलाइन करो डेट, 6th प्लान में लॉन्च हुआ है. एंड कैचमेंट, व्हाट इज कैचमेंट? उधर लिखो स्टडी एरिया. कौन सा एरिया को ये स्टडी करता है? 8 फ्लड प्लोन रिवर्स, ओपन ब्रैकेट, गंगा एंड 7 स्टेट्स एंड 1 यूनियन. देखो नॉर्मली ऐसा आता नहीं है, बट दिस ईयर इफ दे आस्क यू what is integrated watershed development, you have to write only these 3 simple points. Happy? Second program का नाम उधर लिख देना in your notebook. National Project on Development. Did you see? Down में है, 91 में है. और कुछ लिखो. Such wonderful friends, huh? What did she write there? गलती से और कुछ मत रख दो, उसमें भी वो चार्ट लिख देगी. It's okay ना, that is between the girls. Why are you interfering? I said stop her, that's it. National Project on Development and Use of Biofertilizer एक प्रोग्राम है, उसके नीचे और एक प्रोग्राम लिखो, National Project on Quality Control. ये सेकेंड प्रोग्राम है. Now you mark implemented in 7th 5-year plan. Mark in the volume. Encourage the use of biofertilizer. And उधर ही है ना, National Project on Quality Control. And third point, underline rainwater harvesting. Third program वो भी volume में ही है. Only write the heading in your notebook. Reclamation and development of river area. Did you see? Second program है उधर, integrated का नीचे है. Reclamation and development of river area. वो notebook में लिखना, heading लिखना. So next 15 minutes, don't go out. Stay inside only. If you want to play, we have a terrace, I think, ऊपर. Don't fall down. वो भी मेरा ऊपर नाम है. Don't go there. UT का ही terrace है. But that's mainly for the teachers, not for the students. Then go, come up. वो program दिखा, underline करो. 87-88 launch हुआ है. Bracket open. MP close bracket Rajasthan. Components. Halt further ingress of reveries. Reveries मतलब वो जो river का जो action है वो है. Afforestation, reclamation. Who can tell me the meaning of the word reclamation? और कर लो. What is reclamation? Any idea?
अरे बाप रे, what is that? Absolutely right. That's the English meaning. Geography meaning क्या होता है? If you have gone to Bandra area, there is one big ground called Bandra Reclamation Ground. वो ground पूरा marshy land था. Government क्या करता है उसमें मिट्टी डाल डाल के ये करके उसको reclaim करता है. अभी you go to Ulwe, you might have gone. The new airport which is to be launched by 2024. मुझे तो नहीं लगता होगा. Okay. जब भी होगा, it is a reclamated area. पहला उधर पूरा mangroves था. You know what are mangroves? अभी गवर्नमेंट ने उसको पूरा खत्म कर दिया, which is not good for the signal. But ठीक है ना, एयरपोर्ट आ रहा है, बस we are happy, है ना? चलो, let's go on to page number 92. All done. You go to page number 95. Put star mark to certain exam related questions. Did I say Khadar and Bhangar? Please put 2 star mark to D. Action of wind and action of water, just tick it. C 1 star mark, alluvial soil of Ganga Valley, alluvial soil of Deccan Strip. And come down to page number 9900 or we have 103. Now there are how many questions they have given? 5. 103 and 104. Either of 4, 5, any question आपको लगता है which you will not be Sir, able page to number 103 and 104. You can pick any one. जो उसका आंसर मैं अभी दूंगा. Rest your task. पहले रन थ्रू करो क्वेश्चन को. मैडम जी. Your name I forgot. What's your name? Come once. Your name? Nairobi. What does that mean? sir, मनी है इसमें कैरेक्टर का नाम था. Bible name है सर. Being blessed. कभी blessing हमको भी दो. क्वेश्चन नंबर 1 2 5 कौन सा चाहिए? जल्दी बोलो. ऐसा करके सारा ही मेरे से पूछ लो. Hey, listen, I am giving the idea. Question number 5, he is asking, in brief, any 3 methods of prevention. हम लोग ने वीडियो दिखाया, वो सब पॉइंट्स क्या था वो? Prevention of soil erosion ही था. Now come back to climate chapter. It's on page number. What was that point she told? How many points did? 60 है. नहीं that 78 first point क्या था जो नहीं दिया मैंने? I am giving climate chapter 3 points which I did not give last class. Chalo, write down. पहला point है surface winds. Am I correct? Page number क्या है? 16. Oh, thank you. So wherever you have written these headings, 79, please continue the answer which I have not given. Surface winds I am giving. Don't search right now. फिर copy paste कर. Climate of a given region. Continue climate chapter का last 3 points, factors affecting the climate. Climate of a given region is adversely affected by. क्या हुआ नहीं समझा? ए तुम्हारा फ्रेंड को बताओ. I think you got it. Climate of a given region is adversely, spelling ADVERSELY, adversely affected by surface winds. Why Manasvi is a spectator? तो क्या हो गया? ये 3 पॉइंट तो लिखो. Adversely affected by surface winds. Again, I'm repeating. Climate of a given region is adversely affected by surface winds. Continue. Winds like Loo, L-O-O. Winds like Loo, L-O-O, उसको underline करो. Hot, dry, dusty winds. Kitchen. Auto लटक रहा है. नहीं auto वाला देखना. वो नहीं. Hot, dry, dusty winds. Lovely auto. Hot, dry, dusty winds
blowing over major parts of North India. Auto ride cheap, huh? Spreads. Hot, dry, dusty wind spreads. Northern India. Spreads. Scorching. Spreading over, flying, whatever. Northern India. Spreads. Scorchy summer conditions. SCORCHING. स्कॉचिंग नहीं है, स्कॉर्चिंग है, फिर वो टाइगर हो जाएगा. समर कंडीशंस. अभी ओवर क्यों लिख रहा है? ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पहले बोल दिया. नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. जगह खत्म है तो बना. नेक्स्ट पॉइंट आई एम गिविंग. It is mainly observed, western disturbances. It is mainly observed. It is mainly observed during winter season in the northwest India. It is mainly observed during winter season in northwest India. Underline winter, underline northwest. Second point. It brings about rainfall, or it brings in about Benili. It brings in rainfall in Punjab and Haryana. Punjab and Haryana. Dash hyphen creating a cyclonic disturbance, created by cyclonic disturbance. And the last point is jet streams. Cyclonic, created, past perfect, disturbances. How much time same word comes? Jet streams. Next point is jet streams. All wants to relax. At 10:45 my lecture ends, is it? Jet streams. यार आप लोग कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं अभी? I don't know. Have you visited that Palm Beach, Moraj area any times? अभी एक छोटा सा अट्रैक्शन है. वैसे भी उधर पता नहीं. मेरे कुछ 10th ICSE का लास्ट ईयर का एक लड़की ने बोला सर वी आर कमिंग टू अतरंगी. मैं बोला अतरंगी एवरीडे आई सी, बट वेयर इट इज आई डोंट नो. मतलब हर रोज मैं उसको देखता हूँ. अतरंगी लॉन्च ऐसा कुछ तो लिखा है. दे वर सेलिब्रेटिंग सम बर्थडे पार्टी. तो लड़की ने मेरे से पूछा सर वो अतरंगी आपके एरिया में किधर है? बोला रुक 2 दिन टाइम दे, मैं ढूंढता हूँ. The next day she was in that launch or whatever and she called me, sir बहुत बढ़िया है सर. बोला किधर है तू? बोला अतरंगी में है मैं. Then next day I went into search and जबकि मैं जो सिग्नल से गाड़ी लेके बाहर आता हूँ ना, it is a top hotel. हर रोज देखता हूँ उसको मैं. पर जब किसी ने आप लोग ने मेरे से पूछा अतरंगी किधर है, मैं बोला हाँ इधर ही किधर है नजदीक. तो जैसे आप लोग ने ये स्कीइंग बोला ना, इन आर एरिया एक बड़ा फ्लाईओवर जाता है. उसके नीचे पहला बिकारी सब लोग का टाइम पास चलता रहता. अभी एनएमएमसी ने क्या किया, उनको सबको shall I use a wrong English Hindi word, hakala. अभी now they have done this huge platforms. एक तो वॉलीबॉल कोर्ट फर्स्ट क्लास बना है and all the ICSE and CBSE students in my area they come evening. बैडमिंटन कोर्ट बना है. इवन स्केटिंग का भी, स्केटिंग का भी लोग ने बना दिया. एंड ब्यूटीफुली इट इज पिजन नेट भी डाला. मुझे लगा इतना मेहनत से एनएमएमसी काम कर रहा है, मुझे तो नहीं लगा कि फ्री में छोड़ेगा. गेट भी डाल दिया, डॉग कुछ नहीं अंदर जाने का. नाउ दे इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यू विल फील इवनिंग 6 से लेके आ जा बस. इवनिंग 6 से लेके अप टिल नाइट 10-11 एंड फ्लड लाइट्स नहीं है, लाइट्स भी अच्छा दिया है, especially for 10th standard those who have completed, and they are beautifully making use, especially that volleyball court. मुझे भी कभी कभी जाने का, मैं बताता हूँ, एड्रेस देता हूँ, लोकेशन भी लाइव सेंड करेगा. मैं वॉलीबॉल कोर्ट में बहुत बार गया है ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, बट आई हैव नेवर स्कोर्ड अ सिंगल बास्केट. आई एम सो सॉरी, बास्केटबॉल.
तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स मुझे अभी भी चिढ़ाते हैं, एक भी बास्केट स्कोर किया क्या, मतलब है ना घर पे 3 है। आई वॉज नॉट वेरी गुड विद स्पोर्ट्स एक्सेप्ट लिटिल बिट ऑफ क्रिकेट। अभी लोग ने क्रिकेट का भी अंडर बोल रहे हो क्या, अंडर आर्म के लिए वो भी बना दी। एंड NMMC has offered very good facility, free of cost. Why I'm saying, because instead of playing in that sun, and एक तो फ्लाईओवर है और नीचे एरिया मस्त बना है, तो ये दोनों इन दोनों को बोलने का, स्कीइंग स्कीइंग बोल रहा था ना, तो आई कैन सी स्मॉल चिल्ड्रन हैविंग दैट स्कीइंग व्हील बोलते हैं ना, शू वाला, स्केटिंग, दे आर डूइंग ब्यूटीफुली वेल। तो 2 दिन के बाद मैंने देखा एक बड़ा स्केटिंग क्लब का एड आ गया, 900 पर कोर्स ऐसा कुछ तो उसने डाल दिया। सो स्पोर्ट्स प्लेइंग इज ऑलवेज गुड, बट डू नॉट गो इनटू दिस नियर टू दैट एरिया। मोराज सुनो, उधर आ जाओ, कोई भी बताए, बट उसके लिए इतना दूर मत आओ। शायद खारगर में भी वो लोग बनाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, यस, यू नो दैट बिल्डिंग। तो इधर क्या कर रहे थे, और एक भी घर है, अरे अभी मालूम पड़ा हाथ और पैर में कहां से आता है। राइट ऑन जेट स्ट्रीम्स, हाई स्पीड मूविंग विंड्स, high speed moving winds in the upper layers of atmosphere. High speed moving winds, Kaushal Rathi, writing, upper layers of the atmosphere, producing a bigger सर मैं influence. 2 मिनट में आ रहा हूँ सर। ठीक है, जल्दी जाके जल्दी आ। I understood. अरे वो घर पे जा रहा है ना, what are you doing? Producing a bigger influence over the arrival and departure. Bigger influence over the arrival and departure of monsoons. Change the para. Change the para. Hence, variety of factors or several factors, variety मत लिखो, खाने पीना याद आता, several factors influences climate or weather. Several factors, hence several factors influences climate or weather of a given region. Bus. Now we are having good 15 minutes. 5 minutes you can put your head down without looking left and right and no utter butter words. Next 10 minutes you will be filling up climate ka question answers right in my presence. है ना? चलो, put your head down. No noise should be there. क्लाइमेट का जो क्वेश्चन आंसर्स है ना वो स्टार्ट कर ले सॉइल करने के लिए, वो नहीं है तो फिर सॉइल का स्टार्ट कर, सॉइल का है ना, इसमें नहीं है। इफ आई सी एनीबडी टॉकिंग लेफ्ट एंड राइट, ही और शी विल बी पुल्ड आउट। हाँ जा चले जा। टीचर को देख देख के यौन मत करो, दैट इज द बिगेस्ट रेस्पेक्ट यू आर गिविंग टू द बच्चा। You see, I'm closing. क्लास खत्म।
ए इधर आ, ये लेके जा। ये देख ले बंद है क्या चालू है? सर चालू हो गया। Now what is the next thing? अच्छे बोलते हैं। Volume question answers चालू है। Volume question answers of the chapter called soil. कर लो दैट इज enough। हाँ सारे न्यूमेरिकल्स अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। क्लाइमेट इज कंप्लीट अच्छा सॉइल का ओनली दैट 1 to 5 सर क्लाइमेट भी करना और न्यूमेरिकल्स भी करना न्यूमेरिकल्स हम लोग ने 3 किया ना। हाँ एंड आई होप टाइम इज डन। Okay, I'll say thank you to everyone. Take care of your health. I'll see you next Thursday. Bye bye and take care. Bye.